Hello, everyone. We're going to start the meeting in some time. Good evening, everyone. Am I audible to everyone? If I am audible, can you please type a yes in the chat window? Right. Thank you. I'm just going to wait for a couple of minutes before I start with the session. I'm just trying to unmute Anis. Anis, I'm unable to see you. Can you just raise your hand? So I'll unmute you. Why can't I see it? Yeah. I am unmuting you now. Please accept. Okay. I'm unmuting you. Please accept. Yeah. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Anis sir will come in 5 minutes. Okay. Okay. सर कोई और बात मुझे बताइए सर, अभी सर ऊपर गए हैं किसी काम से, अभी 5 मिनट में आने वाले हैं. Fine. So we'll start or we'll wait? Sir, you can start because it's already 4:04 and we have given the time 4 o'clock, Done. right? Excellent. Hello, everyone. Good evening. Welcome to the session when we are going to talk about Homi Bhabha, KVPY, as well as IISER. These are the three primarily exams that we are going to focus on today. At any point of time throughout this entire session, if you have any doubts, any query, I'll request you to please ask those questions
in the chat box. There are some of our teachers and our staff members who will be more than willing to assist you with your answers. And if you have a direct question to me, I don't mind answering as well, but I'll be dedicating the last 10 minutes of the session for the Q&A round. As of right now, I'll be focusing on the session first. That being said, also what we need to focus on is, just hold on, right? And if there's something that you really need to ask or say, please raise your hand or comment. And Shahrukh, if you're observing, you could let me know if there's something important, if someone has to say, or even if Anis has to say something. Before I start, I'll just give a quick introduction of Anis classes. Anis classes have been in the industry for the last 33 years. And we are proud to say that we have more than 550 officers that has been created by Anis Academy. I mean, we have 550 officers serving in the Indian defense system, be it Navy, Army, or Air Force. We still strive to produce more officers each year. And these sessions are basically conducted so as to empower and educate parents, teachers, as well as students. Because there's still a lot of people who are not aware about all the options available as far as the education streams are concerned. So we have lectures on an everyday basis, except Fridays, from 4 to 6 or 7, right? Today is one of those days. My name is Sharjeel. I'm a physics teacher and I'm a part of the management team as well for Anis classes. On that amazing note, let's start off with today's session. So as you could see, the first examination or the first course that we are going to talk about is called as the Dr. Homi Bhabha Bal Vaigyanik Spardha. This is conducted by the Bombay Teachers Association, the Science Teachers of Bombay Association. They are the ones who conduct this. What is this? What are the details about this? We are going to understand right now. So what does this examination is also called as the Homi Bhabha Junior Scientist Examination, right? And it basically promotes 3 important ideas. What are these 3 important ideas? First, it talks about research, right, as to how research is important in today's world and how India as a country has started funding a lot of money towards research. Earlier, it was not the case, but for the last 10 odd years, we have been investing a lot of money and a lot of resources for research. Second, this examination aims to inculcate an interest in science, right? Because see, as we mentioned over here, it's a junior scientist. So we are targeting little kids over here to inculcate an interest in science. And finally, how can you use these science as an application in daily life? These are the 3 important points, correct? Now, before I proceed, I just remember that I will request all those of you who are present right now, please write your name and phone numbers in the chat box. That will be really appreciated if you'll do that. Thank you so much, right? So again, just to summarize, so Homi Bhabha examination, that is the junior scientist examination, promotes 3 important things, that is research, interest in science, and applications in daily life. Now, what do we know about this? So ideally, what are the eligibility criteria for writing these examinations? So students from Marathi medium, English medium, as well as semi-English medium are eligible to write this examination. This examination is primarily conducted for students in Maharashtra, primarily, right? Now, at which 2 levels can these exams be conducted? When a child is in 6th standard and when a child is in 9th standard. So there are 2 attempts, right? 6th standard and 9th standard. Now, a point to be noted over here is that this examination could be attempted either in English or either in Marathi. So for example, a child from semi-English medium, while filling the form, has an option to select the language. The child could select English as an option or Marathi as an option. But please remember, once an option has been selected, it cannot be changed. So for example, let's say there's a kid, A, he's from semi-English medium, and he wants to attempt the Homi Bhabha examination, as we call it in short. Now what happens is, in the form, if he selects English, now at the time of the examination, if he says, no, I'm not really comfortable in English,
I want a Marathi paper, that will not be done. So please make sure that the language that you're selecting should be the one that you're most comfortable with between English and Marathi, right? Now, how do we go about what is the curriculum? Now, for, as I said, there are two attempts. One is when you're in 6th standard and the other one is when you're in 9th standard. So for 6th standard, what happens is, what is the curriculum for the 6th standard examination? It is the textbook of 4th standard, 5th standard, and 6th standard, right? Of SSC syllabus, that is the Maharashtra state syllabus. And the related content from CBSE, ICSE, and IB. Allow me to explain what does this mean. First and foremost, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चा 6th standard में है, and if he wants to attempt this examination, which is the Homi Bhabha examination, he needs to study from the textbook of 4th, 5th, and 6th standards of Maharashtra state textbook, plus whatever content is there in the 4th, 5th, and 6th standard textbook of Maharashtra state. He should also refer the same concept content from the CBSE, right? That's the basic curriculum for 6th standard. Similarly, for 9th standard, the curriculum would be the textbooks of 7th, 8th, and 9th standard from the Maharashtra state board syllabus, and the related content from CBSE, ICSE, and IB, right? I hope so this is absolutely clear to all of you, right, as to what the curriculum is. Now understand, it depends on the child as to how much they want to prepare. So if you say, can my child only study the Maharashtra syllabus and attempt this examination? Yes, he can. Absolutely. But the chances of him getting selected would be lesser than the child obviously preparing from the Maharashtra state syllabus, the CBSE, ICSE, as well as the IB board. So how much you prepare, that's your choice. But your percentage of selection in the final rounds depends on how much are you aware of the content. So what does this exam actually test? They basically check your understanding of the concept. They do not check how much you have memorized, because unfortunately a lot of our system works on memorization, right? These examinations that I'm going to talk about today, all three of them. So we named this entire session as Amar, Akbar, Anthony. What is Amar, Akbar, Anthony? These are three different concepts which have the same underlying denominator. So for these three examinations, the underlying denominator is research. And the second underlying denominator would be that the core focus for these examination is not on memorization or rote learning. It is primarily there to understand how much a child has understood a particular topic or a particular concept. That is important, right? What is the weightage of questions? For 6th standard, there'll be 10% of the questions that will be asked from the 4th standard textbook. About 20% of the questions would be from the 5th standard textbook. And about 60% of the questions would be from the 6th standard textbook. And finally, last but not the least, the remaining 10% would be based on the general knowledge in science. Understand, the ambiguity comes over here in this 10%. Because the 10% of 4th standard is defined, the 20% of the 5th standard is defined, the 60% of the 6th standard is also defined. So when I talk about general knowledge in science, it could be anything. It could be what is the current research happening in a particular concept. It is about the latest technology. It could be what rockets the SpaceX is going to work on. Recently, SpaceX had a manned mission launched. On which rocket, for example, that was launched? The answer is the Falcon heavy rocket, right? So such questions could be asked in GK as far as science is concerned. So the child should also be aware about the current scenario as far as science and technology is concerned. Similarly, for 9th standard, the syllabus, the weightage of marks would be 10% for 7th standard, 20% for 8th standard, and about 60% for 9th standard. And as it was for 6th standard, 10% of the marks would depend on the general knowledge in science examination. So that is one important thing, right? I'm just checking if there's
Excellent. So everyone is on. I'm just checking the chat over here right now. Only once I'll do that because I just wanted to check if you're understanding my pace or you're not understanding. Yeah, I'll also try to speak in Hindi as well. I'll mix it up. ठीक है, मैं mix करता हूँ, कोई issues नहीं, right? Thirdly, important step है selection process. क्या होता है इसका? तो understand ये exam जो होता है ये 3 phases में होता है. And as usual, there's no marks for guessing what are these phases. These 3 phases would be phase 1, phase 2, and phase 3. I mean, obviously, right? The phase 1 is the written examination or the written test. The phase 2 is a practical test, a very interesting phase, in fact, right? And finally, the phase 3 would be a personal interview. For example, I think for most of the students in Pune, this is conducted in Kothurud. I mean, if you're from Pune, Kothurud, there's a Bal Shikshan school. I think these written tests as well as the practical tests are conducted there. And the final interview is taken in Bombay, in Sion, right? So for students wanting to appear, the written test and the practical test would be here itself in Pune. So you don't have to worry about it. I mean, if you're in Pune. And if you're in an area pretty nearby, I think Kothurud is easily accessible. Now, when I talk about written test, what happens? Understand this. Now, this is very crucial. Okay, this square thing is very crucial. From the phase 1, there's only a top of 7.5% students who are selected for phase 2. Understand? On an average, I think there's about 30,000 students to your test likhte. 30,000 to 50,000 is the general idea who write these tests. 30,000 भी अगर मैं एक लोअर लिमिट पकड़ता हूं तो इस 30,000 में से 7.5% लोग जो है वही जो टॉप 7.5% है दे आर सेलेक्टेड फॉर फेज 2. फेज 2 में से जो है ओनली द टॉप 10% स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर फेज 3. बिफोर आई गो टू फेज 3, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट फेज 2. फेज 2 में क्या होता है समझो इस बात को पहले. फेज 2 मैंने बोला प्रैक्टिकल टेस्ट होता है. प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब क्या? 6 स्टैंडर्ड लेवल पे बच्चा है तो ये 30 मार्क के लिए टेस्ट होता है जिसमें 10 मार्क होगा बायोलॉजी का, 10 मार्क होगा केमिस्ट्री का और 10 मार्क होएगा फिजिक्स का. The child is supposed to demonstrate, they are supposed to do a practical and try to understand a concept by themselves. मैंने कहा था ये एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. So they'll be giving the examiners would give a child certain guidelines. The child is supposed to do a practical, right, and infer the results. ये बहुत important step होता है. इसका result जो है infer करना है बच्चे को. Right. It's very interesting. 9 standard level पे 30 marks का ही होता है, but 3 की जगह you have an option. You could select one, physics, chemistry या bio में से. और इनमें से जो top 10% बच्चे select होते हैं ना, they go to the final phase which is interview phase. ये इंटरव्यू में होता क्या है? एक जो चीज मैंडेटरी होगी इंटरव्यू में वो क्या है? ये जो प्रैक्टिकल आपने किया था फेज 2 में उस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको फेज 3 में इंटरव्यू में. दैट हैव यू एक्चुअली अंडरस्टूड द प्रैक्टिकल और यू जस्ट डिड इट आउट ऑफ फ्लूक. दैट इज व्हाट इज टेस्टेड इन द इंटरव्यू. एंड देन एज आई सेड सम अदर general knowledge about science and overall what is your personality like. That is important trait. Now I'll tell you a very good news about this. If you have cracked phase 1 and phase 2, आप जैसे ही phase 3 पहुंचते हैं, you are guaranteed a medal. So the goal should be to crack phase 1 and phase 2. That's it. Phase 3 में पहुंच गया तो एक ना एक मेडल तो मिल ही जाएगा. I'll tell you the medals का. अच्छा, it is medals plus scholarship. Alright, medals और scholarship दोनों मिलता है. I'll tell you क्या है इसका breakup. Phase 3 में the top 10% get a gold medal and I think a scholarship of about 3,000 or 5,000 rupees. Right? The remaining 60%, now that's a huge margin, right? The remaining 60% of the students get a silver medal. 100% बच्चे आए phase 3 में, जो phase 2 का 10% जो बच्चा था वो इधर आया. मान लो 100 बच्चे थे phase 3 में जो है. phase 3 के 100 बच्चों में से पहले 10 बच्चों को गोल्ड मेडल मिलेगा. The next 60 students will get silver medal और जो 30 बच्चे बच जाते हैं उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिलता है. So as I said, a medal from Homi Bhabha is a very reputable thing.
So it is, if you get even a bronze medal, it is fine. Obviously, if you get a gold medal, nothing beats that, right? So these are the three phases in which the selection and the examination takes place, right? What is the schedule? How does this work? So the phase one of the examination is conducted in the first week of October. For example, for 2020, right? The forms are not out yet. The examination would be conducted in the first week of October, जहाँ पे एक written test होगा for 100 marks, and the time that would be allotted to you would be 90 minutes, right? Phase 2 जो होता है, which is the practicals that are supposed to be conducted, happens in mid-December, right? And finally, जो phase 3 है, that is the final interview round that takes place in mid-February. The results are not announced there and then. I'll tell you the schedule of results as well. I repeat, phase 1 is conducted for, it's a written examination for 100 marks for 90 minutes, and it is conducted in the first week of October, usually. This year could be an exception. I'm not sure about it yet. Phase 2 जो होता है ये mid-December में होता है. And finally, phase 3, the personal interviews conducted in mid-February. ठीक है? Results कब announce होते हैं? Phase 1 का जो result है, it is announced in the second week of November. Phase 2 का results are announced in the second week of January, and the prize distribution ceremony is conducted in the first week of March. जो बच्चे second phase तक भी आ जाते हैं, उनको participation certificates मिल जाते हैं, right? So this is how the Homi Bhabha examinations are conducted. So primarily here, the registrations are done from the schools. So if you are interested that your child should appear for this examination in 6th or 9th standard, it is important that you go and talk to the class teachers and tell them that whenever the forms are announced or whenever the applications are open, that you will want to fill them out. Otherwise, if you want any sort of help or if you want the actual details about, you could visit this website, which is easy, msta.in. Mumbai Science Teachers Association. That is what MSTA is, right? So this is the website. If you need any information about Homi Bhabha examination, this is the website that you need to visit, right? I'll just check if anyone has any questions about this, then I'll proceed. Right. I think मैं हिंदी भी यूज कर रहा हूँ, तो I think that should be okay. ठीक है, मैं ज़्यादा हिंदी में बोलता हूँ, कम इंग्लिश में बोलता हूँ, if that suits everyone. Let's come to the second and one of my favorite examinations, right? Which is called as the Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana. This examination is conducted by the government of India, right? It is also called as KVPY, and KVPY promotes what? It promotes research. As I said, that is the underlying denominator for all these three examinations. It also identifies students with talent and aptitude. हमारे देश में we need good scientists. हमें अच्छे scientists चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो अच्छी research करें. And this examination is a launch pad for these students. And finally, it helps students realize their potential, right? अब KVPY एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी स्ट्रीम क्या है, इसको समझो, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है. 3 स्ट्रीम्स होती है एलिजिबिलिटी के लिए, SA, SX एंड SB. मैं एक्सप्लेन करता हूँ तीनों डिटेल में, कोई टेंशन नहीं है. आई रिपीट, 3 स्ट्रीम है, SA, SX और SB. SB right now I don't think so हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. I'll still talk about it, but पहला I would like to talk about SA. स्ट्रीम ऐसे क्या होता है? These are the students who are enrolled in 11th standard right now. तो अपने पास जो SPI वाला बैच है ना, SPI, you are in the 11th standard right now. You could appear for KVPY this year. KVPY के फॉर्म्स आते हैं जुलाई में, second week of July usually, right? इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? You should have scored a minimum of 75% marks in mathematics and science subjects in your 10th standard board examination. I repeat, अभी जो स्टूडेंट SPI में, हमारे स्टूडेंट जो SPI में है, राइट, आपको, आई अंडरस्टैंड इस साल रिजल्ट्स नहीं आए हैं अब तक, या डिले हो गए हैं. आई एम श्योर देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ
adjustment that would be done by so this examination is conducted by the, I said, Government of India, but the body that conducts this examination is called as the All India Physics Teachers Association. जो ऑल इंडिया फिजिक्स टीचर्स एसोसिएशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड आई एम श्योर दे विल ट्विक सम रूल्स दिस ईयर, राइट. आई विल टेल यू व्हाई एम आई बीइंग सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट. इट्स बिकॉज मैं आइसर के बारे में जब बात करूंगा ना, आई विल टेल यू अबाउट दैट. सो द मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, मैथ और साइंस मिला के आपको 75% आने होंगे. दिस इज फॉर ओपन कैटेगरी. फॉर SC ST या जो दूसरा माइनॉरिटी कोटाज है उनके लिए 65% होता है. ठीक है. दूसरा कैटेगरी है SX. SX कौन सा होता है, जो बच्चे इस साल 12th स्टैंडर्ड में है. हम लोगों का 12th वाला जो बैच है, अनीस या Anish, I think you're already unmuted. You want me to unmute you? Anish, I'm unmuting you now. Wait. I ask our students to go to the YouTube. Already there are hundreds of participants. Right. Please, immediately. All our students, SPI, 12, 12 plus, anyone. Even our staff. Okay, even our staff. If you're really connected to Anish's classes, I'll request you to go to YouTube. We have a live stream going on YouTube right now. YouTube, baby. You just need to search Anish Kutti on YouTube. You'll find the channel and there's a live stream going on for the same thing. I'll request our students and everyone to please go there. See, because Zoom has a limit of about 100 participants and there are others who are trying to join in, but because the number is achieved, they're not getting inside, right? So anyone, our staff, our students, everyone who's connected to us, please, I request you to switch to YouTube. One or two staff could be here because if you want to reply to the comments and stuff like that. Rest everyone, please switch to YouTube. Thank you. All right. So I was talking about the SX stream. SX मैंने जैसे बताया जो हमारे, okay, Anish, I'll just unmute you, Anish. Anish, you need to accept. Unmute. One more thing that you have to specify, Sharjeel, is we are talking about KVPY, IISER, Homi Bhabha. The reason behind that is that children from the basic standards, helical structure and honeycomb structure, they have to give this exam. इनको ये exam देना पड़ेगा. इससे देना पड़ेगा कि अगर ये exam देंगे तो ही उनके लिए NDA देना आसान होगा. I agree. So हाँ, ये मकसद है. So stress. Some of them are asking, are they connected to defense? Tell them, no, defense. I have kept this as a closing remark towards the end, why it is important. I'll do that, inshallah. Thank you. All right. So I was talking about the SX stream. SX, जो हमारे बच्चे अभी 12th standard में है, right? जिन्होंने अभी 12th का exam दिया है, जो अभी 12th में गए हैं, you can appear for this examination. Again, condition यही है कि last year के आपका ये देखो 75% मार्क्स आने चाहिए थे आपके 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में. दैट इज अ क्राइटेरिया. ठीक है. सो अभी तक के मैंने KVPY एग्जामिनेशन 2 स्ट्रीम्स बताई है. एक जो बच्चे अभी 10th पास होके 11th में जाएंगे उनके लिए, और दूसरा जो बच्चे 11th पास होके 12th में गए हैं. देयर इज वन मोर स्ट्रीम कॉल्ड एज SB. SB क्या होता है, वो बच्चे जो 12th पास करके FY में है, बट FY कौन सा, इंजीनियरिंग का नहीं चलेगा. FY BSc, anyone who's taking pure science, and if you're in the first year of that pure science course, you are eligible to appear for KVPY examination. I repeat, SB is a stream जहाँ पे first year BSc के बच्चे जो है, why BSc, why specifically BSc, why not engineering? Because KVPY wants students to study pure science and do research in that, become scientists in that. There's a whole lot of innovations pending in the pure sciences. हमारा देश बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्योर साइंस के लिए. आज इंडिया इज कॉल्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. कोविड-19 का इंशाल्लाह जो वैक्सीन है वो हम बनाएंगे. Because we are pumping in a lot of money for research. And research करना है तो आपको प्योर साइंस के रास्ते जाना पड़ेगा. I mean, you could also go through engineering, but that becomes a different sort of research. When you study pure science, that's an absolutely different level of research then. Our nation needs good researchers. That will drive our economy in the future.
if we were to develop vaccine in the next couple of months, I know it takes a 5-year cycle, but assuming in the next 1 year, 1.5 year, that could boost our economy like nothing else. We need scientists. That's why these exams are important. And also, as Anish said, I'll be highlighting that thing in the end, because then I'll be able to talk about each individual examination. Right. Moving forward, what is the curriculum for KVPY? There's no prescribed syllabus. Absolutely nothing. Basically, they want the students are tested for understanding and their analytical abilities. Two important traits for research. You need to be able to understand the concept and you need to have a very analytical mind. However, what is recommended is to study syllabus from 10th and 12th standard. So students who are into 11th standard right now are SPI batch. If you want to attempt the KVPY this year, you will be asked questions from your 10th standard syllabus. People in FYBSc, you'll be asked questions from your 12th standard. I again repeat, this examination could be given at 11th, 12th and FYBSc level. 3 times you could appear. And what are the benefits? I have not mentioned in the slide. I'll just still want to highlight the benefits of KVPY. I've already told you that for Homi Bhabha examination, you get a scholarship, about 5,000 rupees or something like that. With KVPY, there's again multiple rounds. First is the written examination, then there's a personal interview. 2 rounds, right, primarily. And if you're selected, if you crack both these rounds, you are called as a KVPY fellow, or sometimes you're also called as a KVPY scholar. Ye naam mein kya hai? Why is this name, this tag that I'm saying that a student is a KVPY scholar? Why does this matter? These students who are the KVPY scholar get an I card from the government of India. Understand, we are civilians. They are going to get an I card from the government of India, which gives them an access to all the libraries and the labs across the nation. I am a civilian. I cannot walk into BARC or TIFR. I cannot. These students who have this I card could. They could go there. They could talk to the scientists, try to understand what is happening, try to understand how to go deeper into a particular subject. But that's not it. That's not it. Every year from Maharashtra, so different states have different areas. In Maharashtra, what they do is all the KVPY scholars from Maharashtra state are accumulated in the summer vacation in a place near Mumbai called as Nerul, Nerul, where they have a camp for 1 month, 1 or 2 months complete. Their accommodation, their food, their traveling, everything is paid by the government of India. And what happens in these camps? They work on governmental micro projects. What do I mean? I'm sure you guys have heard about ISRO, ISRO, right? ISRO is working on a lot of tech. They are working on a lot of big projects. So out of those, this is just an example of ISRO. There are a lot of other bodies as well, okay? They take one small part of that research and hand it over to these kids who are in 11th standard. Imagine that, who are in 12th standard. And they are working on these projects. And these projects will go to Mars. They'll go to the moon. They'll go into orbit, right? Not only that, the government of India will pay you every month a stipend of 5,000 rupees if you're in 11th standard, with an annual contingency of 20,000 rupees. मतलब महीने का गवर्नमेंट आपको एक स्टाइपेंड देती है 5,000 रुपए का, to perform research, to buy books, to do any other thing, right? और एक साल का contingency fund भी देती है आपको 20,000 रुपए का. वो क्यों होता है? You're doing some experiment or you need certain things, you're falling short of money, the government will pay it up for you. That's not it. आपने 11th standard में KVPY scholar बने, and if you continue 12th FY, SY, you go up to PhD level. PhD level पे आप जाते हो, you do your PhD, you're as good as a government employee. Secondly, why is this important? People wanting to take admission in abroad universities. You want to go to Oxford. You want to go to MIT. I'm talking about all the top Ivy League colleges. अगर आपको वहाँ जाना है,
you have to send your a resume to them first. And if they see in your resume that you are a KVPY scholar, you, my dear child, will have a red carpet welcome. वो यूनिवर्सिटी बोली कि भैया तुम आओ पढ़ो, तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे, हमारा फीस नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तुम आओ बस पढ़ो हमारे साथ. बिकॉज ये जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है ना, उनको पता होता है इंडिया के क्रीम क्राउड कौन से एग्जाम्स देते हैं. KVPY is one of those cream examination that the foreign universities sought for. Right? Moving forward, selection procedure. There's an aptitude test जो last year 3rd November को हुआ था. This year because of COVID I'm not sure कब होगा, but यहाँ पे एक basic application form होता है, उसके बाद आपका एक interview होता है. I think I've already told you about this. And once you're selected in the interview, you're called as a KVPY scholar, and you get a kit at your home delivered, which contains the I-card. It contains a lot of things, but it also contains the Government of India I-card. This is the URL if you want to go for the applications. This page usually gets updated in the 2nd week of July, right? For all the application related details and stuff like that. इसी लिंक पे ना आपको एप्टीट्यूड टेस्ट KVPY खुद है ना मॉक टेस्ट देता है, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो. आपको प्रैक्टिस करना है ना, अगर KVPY का एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा है, तो आप KVPY की वेबसाइट से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको चाहिए तो. वो लोग खुद देते हैं वहां पे टेस्ट. ये बहुत अच्छा फीचर है इनका, राइट. सेकंड, फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू एप्लीकेशन, ये फोन नंबर्स है, ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं और डिटेल्स दिए. दिस इज बेसिकली द हेल्प डेस्क फॉर KVPY, राइट. मार्क्स बेसिकली ऐसे स्ट्रीम जो है इसमें सारे एग्जाम, ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा लिखना पड़ता है, राइट. और SB जो स्ट्रीम है उसमें से यू हैव एन ऑप्शन बिटवीन बायो एंड मैथमेटिक्स में से यू कुड चूज वन. You do have that option. Okay, this is again important. So if you're interested, keep an eye on this. The advertisement for KVPY fellowship usually appears in the all national newspapers. जितने बड़े-बड़े newspapers है, you talk about the Times, you talk about the Hindu, you talk about, you know, anything. उन सब papers में it comes first on May 11th, which is the technological day usually, and then it comes in the 2nd Sunday of July. हर साल आता है. Fine. So even अगर अभी का details चाहिए तो you could visit the link and it should be visible. This is basically about KVPY. I'm going to talk about one more examination. I'm going to talk about one more institute. Then I'm going to consolidate that data with you and try to explain why is this examinations, why all these examinations important, even if you don't want to get into research. अगर आपको रिसर्च नहीं भी करना है तो ये आपके लिए जरूरी क्यों है ये बताऊंगा, ठीक है. तो हैंग अराउंड विथ मी. The next examination, this is an institute basically called as the Indian Institutes of Science Education and Research, or as it is also called as in short form IISER. IISER, we call it as IISER. IISER भी ये देखो कॉमन, मैंने बताया था ना, एक कॉमन थ्रेड है जो इन तीनों को ज्वाइन करता है, that is research, right? It promotes research, it enables students to shape the nation, they become scientists. वो मैं बताया ना KVPY पढ़ते हैं, होमी बाबा देते हैं, वो यहाँ पे IISER में आके साइंटिस्ट बनते हैं फाइनली. KVPY पढ़ा, उसके बाद जब BSc करना है तो one of the best institutes in India is IISER. IISER कम से कम 6-7 जगह है इंडिया में, पूना में भी एक IISER है. So people from Maharashtra, people from Pune, you don't have to go anywhere else. IISER is right in Pune, right? And it also helps in implementing sustainable solutions. में जरूरत है. I mean, fossil fuel will not last forever. ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, and it is causing so much of pollution. हमें पता है जैसे ये लॉकडाउन चालू हुआ था उसके कुछ दिनों बाद कितने सारे मीम्स आ गए थे कि people are able to see mountain जो 70 साल से नहीं दिखा दिया उनको pollution की वजह से. People are able to see so many things, right? ये pollution को curb करना है तो we need to have sustainable solutions. Fossil fuel is not a sustainable alternative. We need to find those alternatives,
and it is these kids who are giving these examinations, going to IISER, they'll be able to find this. इसमें streams क्या है, right? So how do you enter IISER? IISER में जाना है, IISER में एडमिशन लेना है. मान लो मैंने अपना दिमाग बनाया, मुझको यार IISER में एडमिशन लेना है. अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? अब मेरे पास कुल मिला के 3 ऑप्शंस होते हैं. 3 ऑप्शन में एक हो गया KVPY, एक हो गया जेई एडवांस और एक हो गया एक SCB. मैं एक्सप्लेन करता हूँ तीनों. KVPY, if you are a KVPY scholar, आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता है आइसर के एडमिशन के लिए. यू आर डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू सेशन डायरेक्टली. इफ यू आर अ KVPY scholar, you fill up the form, say that you are a KVPY follower, upload the requested documents and you'll get a call letter. सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. सिमिलरली अगर आपने जेई एडवांस दिया है और उसमें आपका टॉप 10,000 में रैंक आया, 10,000 बोल रहा हूँ, जेई एडवांस में, जेई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जेई एडवांस में 10,000 में अगर आपका रैंक आता है तो भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना पड़ता है. समझो, मैं बताता हूँ KVPY चैनल में क्या होता है. कैंडिडेट्स हैविंग दिस एंड ऑब्वियसली देयर वुड बी अ कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशन, बट टू बी ऑनेस्ट KVPY वाला बच्चा जो होता है उसके पास वो कट ऑफ आ ही जाता है. एंड जेई का भी 10,000 रैंक होना चाहिए इन योर कॉमन रैंक लिस्ट, PRL जिसे कहते हैं. अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है तो यू आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. कितना परसेंटेज है इन दोनों के लिए? ये दोनों मिला के, जेई एडवांस एंड KVPY चैनल मिला के 25% ऑफ द एंटायर सीट्स आर रिजर्व फॉर दिस चैनल. आई रिपीट, 25% of seats in entire IISERs, जितने I think 6 या 7 IISERs है. If someone can please write down how many IISERs and कौन सी जगह पे IISER है in the comment in the chat box, right? ये जो है उसमें 25% seats are reserved for IISER. अगर ये फुलफिल नहीं होता है 25% इससे, तो जो SCB के बच्चे हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाती है उनको. SCB क्या है? SCB चैनल में जो है स्टूडेंट जिन्होंने 10+2, that is your 12th standard, if you have passed your 12th standard with the science stream, right, then you are eligible to apply. SCB चैनल में क्या होता है? SCB चैनल में you are supposed to write an IISER aptitude test लिखना पड़ता है. IISER aptitude test is also called as IAT. IAT लिखना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू राउंड में जाना पड़ेगा, तब जाके you could get admission to IISER. ये बच्चे जो KVPY और जेई एडवांस लिख चुके हैं, इनको AIT नहीं लिखना है. अभी IISER aptitude test का डिटेल्स में बताता हूँ आप लोगों को. It basically has MCQs obviously, but these MCQs will have only one correct answer out of the 4 options, right? 15 क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट में. चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, 4 सब्जेक्ट में एग्जाम लिखना है. चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है. 15 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट से. टोटल होते हैं 60 क्वेश्चंस एंड द ड्यूरेशन फॉर दी 60 क्वेश्चंस इज 180 मिनट्स. 180 मिनट होते हैं इसमें. इवैल्यूएशन कैसा होता है? फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स +4. रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. फॉर ईच रॉन्ग रिस्पॉन्स यू गेट -1. सो नेगेटिव मार्किंग है. So you need to be very careful when you're writing this examination. Curriculum इसका क्या है? Basically, the syllabus for IIT generally follows the NEET का syllabus. NEET नहीं, NCERT का syllabus follow करता है 11th and 12th standard का. So basically आप लोगों को 11th 12th का CBSE का जो टेक्स्ट बुक है, आपको उसी में से क्वेश्चंस आएगी. मतलब थोड़ा सा हॉट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं. हॉट समझते हो? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है, वो पूछे जाएंगे यहाँ पे. If you want a detailed syllabus on this website, they have given an absolutely detailed syllabus. कौन सा चैप्टर क्या है सब दिया हुआ है. IISERadmission.in पे. This is the website. IISERadmission.in. In fact, on this website you will get all details related to IISER. I repeat, the website is IISER, www.IISER,
IISER is basically IISER admission.in. All right. Application procedure. Good news to all of you. Application because of COVID delay हो गया है, अभी भी चालू है. So if any one of you has done your 12th standard का examination, तो अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो you could still apply. इसमें कौन सा वाला स्ट्रीम चालू है? SCB वाला. मतलब आपको पहला IIT देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू. So you could go to the IISERadmission.in website and you could apply. Right? Secondly, if you need any support for the online application, this is the email address where you could write to. Email address is iiser2020.helpdesk@gmail.com. Anis, I'll unmute you. Anis, I've unmuted you. You need to accept. Unmute here. Actually, Sharjeel, I wanted to add here is that Anis classes will help all the children to fill up the form, provided they take admission with us. It is not a free service, but definitely if they take admission with us, they plan to study with us, then we'll help. Sonali ma'am is also there. Are you online, Sonali ma'am? She's on YouTube. But we will see that they will, when they want to fill up the form, we can guide them. And we can also help them to fill up the form and tell them about the dates. Always on a Saturday. Notifications are already there. And it's just one. Yeah. We will guide them for every exam. Homi Bhabha, KVPY, IISER, जितने ओलंपियाड्स होते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के, हम लोग बच्चों को हर एक फॉर्म का we push our child, we want our child to attempt these examinations. Understand that? Because as I'm going to talk about, ये सब जो है, it builds up a personality of the child to appear and crack NDA finally. Anis, you want to continue, please? Yes, that's what I wanted to say. Because why we are motivating you to give all those exams is what we spoke yesterday about the helical structure and honeycomb structure, that we want children who are laden fruits. We want children who are passionate. We want children who are innovative, disruptive, who are ready to give all these exams. Like as you said, KVPY doesn't have any prescribed syllabus. He has to learn from all books. He has to be in research. So India, the success ratio is only 1%. But if the child is going to give all these exams, inshallah 100% is going to clear India written exam. So he gets a second plan B, plan C ready with him, even if he doesn't clear the SSB. Because see, we can guarantee about the written, but we cannot guarantee the SSB. Nobody can guarantee. If somebody is saying SSB can be guaranteed, it is false. So if he doesn't get into, then there are various options by which the boy or the girl is able to do a number of things. And the percentage of girls are very less with us because till now 11th and 12th boys are more into defense. Government has given a GR, but because of lockdown and COVID, we are not getting girl students. So what we are trying to encourage is for the girls. We're talking about equality. All the girls can give this exam, if I'm not wrong. Sharjeel? Yes or no? All the girls can appear for this. So I want all the girls to give the exam right now, from 5th standard only. As you said, somebody who has to give Homi Bhabha in 6th, he has to be very good from 4th standard onwards. So if they are able to give this, girls are able to give the exam right now, by the time they come to 10th standard, and if the government of India allows entry for defense for the girls also for after 12th, then they will be prepared right from the beginning. So the kind of things that we are right now facing, that children are not able to cope up. Today I asked whether you know synthetic division. They could not tell me. Today I asked them about what is the unit of work in seizure system. So there are a lot of things. Brainstorming has to go on, where people, it's not, and it is not the end of the knowledge. So the children has to be an open book, and he has to see that I have to keep all my options open. Continue, Sharjeel. Thank you. Thank you so much. So basically, that's applications are still open for IISER. People, those of you who are in 12 plus, please appear. Ye test de do. It's the selection is not important. Understand, guys. Selection is not important. What is important is the experience that you get out of writing this examination. Right? This builds up character to become an officer eventually. Officers में जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, Anis always talks about this, every officer needs to have at least 15 basic qualities from day one. Right? These are the quality, जो बोलते हैं ना, quality कब आएगा?
when you try, when you learn, when you fail, when you relearn, तब जाके qualities develop होती है. All these, right from first standard, fourth standard, fifth standard, these examinations hammer these qualities inside an individual. Hence, these are important, right? Okay. Basically, iska yhi tha, but again, as Anis has already said, and again, as I have already mentioned, so yesterday we took a session on helical structure. What is basically helical structure? Allow me to talk about that. ये होता है क्या, बच्चा जो है, see, आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चा है, राइट, इसको अचानक मैं पीएचडी नहीं करवा सकता हूँ, या उसको मैं डायरेक्टली एनडीए में नहीं डाल सकता हूँ इफ ही इज इंटरेस्टेड इन द डिफेंस सेक्टर, राइट. उसको हर एक स्टेप पे थोड़ा थोड़ा हमें जो है ग्रूम करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. इफ यू आर हंग्री, you eat what? You eat food for one time only, or do you say नहीं यार मैं एक साल का अभी से खा के रखता हूँ? वैसे नहीं होता है ना. तो हम बच्चा जब हमारे पास आप 11th में डाल दोगे, 12th में डाल दोगे और बोले कि एनडीए पास करवा दो, हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चा 19 साल से पहले तक के क्रैक कर ले. We give in 100%. In fact, we are the only class which runs for 365 a days. कोई वेकेशन नहीं, कोई छुट्टी नहीं. क्यों? Because that is a quality that we want to inculcate in our children, in our students. Because once they are on the borderline fighting for our nation, वहाँ छुट्टी नहीं मिलती है, right? So ये कैसे एक दिन में नहीं आता है ना. So we want to inculcate this right from a very young age. That's why we have been talking about so many different examinations, because if they appear for these examinations, they get a hang of what is going to happen in the future. Anis, if you could take it forward from here. I'll unmute you right now. Anis, I'm unmuting you. Thank you, Sharjeel. It was a fantastic lecture. Thank you. And the kind of illustrations that you gave was also very fantastic. Thank you. I hope the parents and the children have enjoyed and understood the things. Please appreciate Sharjeel sir. He's a CEO of Anis classes, and a lot of changes are being brought about by him. Peer learning is one of the concepts that he has brought on. Now, there's one more thing that he's going to bring is brainstorming. And as he said, we will be preparing all our children for Olympiads also, various Olympiads. And we want all our children to get medals for us. You know, getting medals, silver, bronze, or gold is also, you are getting the medals, but we'll be the most happy people. Now, one of my student, Arvind Shinde, he was in my 2004 batch. He stood first in my school. For everyone, even I stood first in the school, Jane Barrett, 1988. And in the same school he is from, he also stood first. For 13 years, my students from my class used to stand first in Jane Barrett. Arvind Shinde finished his graduation from COEP. What is COEP, boys? Do you know what is COEP? COEP is College of Engineering, Pune. So he studied in the government college. Then he went to Germany, did a course, postgraduate course in Germany in electrical engineering, and now he is working on electrical engineering. You know, on a similar ties, like, you know, even Elon Musk is doing the same thing. So this is what the brief introduction about him. He's online. I'll unmute him, and I want him to share his experience. And all my students, whoever are interested, we will give you a opportunity. In fact, we'll be highly obliged if you can share your experience of Anis classes. Children will be more motivated. So I'm unmuting him, Arvind Shinde online. Anis, can you ask him to raise the hand? I'll unmute. Yeah. See, he has written Arvind Shinde. You type Arvind Shinde. He's written. He's a participant. He has raised his hand. Yeah. So I'm unmuting you, Alvin. Yeah. You unmute me also. Alvin, Both. Yeah. Hello. Is everyone able to hear me? Yeah. Yes, Alvin. Yeah. So thanks a lot, Bhaiya. It has always been a pleasure to to speak to you or share my experience with all the fellow students. As Bhaiya already said that we are in the same school. We were in the same school. In fact, when I was born, Anis Bhaiya had finished his 10th standard. And then whenever I used to go to school, we have this big board. I mean, the rank holders at the entrance of a school. And that used to be one kind of motivation to see Anis sir's name on this board, and trying to get why can't we be on that board as well. So Anis bhai, I mean, he was not just for me a teacher, but a mentor, a personal advisor and a role model, because for me, from my personal experience,
I never used to go to classes until 9th standard, but that time there used to be pressure from the parents that you have to go to the class. 10th class is a very, 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 very important stage in a life. So I was not used to of going to the classes. And I still remember during the vacations when I joined the classes, the classes used to run from morning 6 o'clock till evening 9 or 10 p.m. And this used to be for first day itself, it was very difficult for me to cope with. And then, I just stopped going. Within a couple of days, I stopped going to the classes. But the very good thing of Anis Bhaiya, he came to my house. He personally, like a parent, he visited my house. He guided me, and he took me with him, to the classes. And from that day onwards, for me, this was never a problem, attending the class for the whole day and with the same energy level, with the same motivation level. The reason behind this, it's not just that you are going to the classes to to learn. It also kind of the way of teaching, how Bhaiya used to teach us. It used to there used to be a kind of how can I say, self-learning thought in our mind going on. किस तरह से हम जितना ज्यादा हो सके पढ़ ले उतने क्लास में. और एक बात कहना हो तो कि भैया का जो वे ऑफ टीचिंग है, लाइक यू हैव टू गो टू द वेरी बेसिक ऑफ एवरी प्रॉब्लम. मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे मैथ्स और फिजिक्स. And when it used to come to physics, the way Bhaiya used to teach us is we used to see whenever we used to see a problem, कोई भी टेक्स्ट बुक से रहे या कोई क्वेश्चन पेपर से रहे, we used to ask ourselves why this question is there, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए. So okay, there used to be fundamental approach कि formula डालो ये solve करो. But when you are able to question the question itself, that thought itself used to make the process even simpler. In fact, हमारे टाइम पे there used to be group A, group B, group C, group D questions. भैया, if you remember, अभी पता नहीं कैसा है. अभी भी है, उसको हॉट्स बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. Yes. So मतलब मेरा मेंटालिटी तब ऐसा हुआ था कि जब इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी मैंने ग्रुप डी से क्वेश्चन आंसर शुरू करना चालू किया था. मतलब पीछे से आंसर देना शुरू किया था क्वेश्चन पेपर में. तो वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस तुम्हारे में अपने आप बिल्ड होते हैं. And I fully solely give all this thanks to Anis Bhaiya, जो confidence raise होता है बच्चों में या students में, to tackle even the difficult problem with full confidence. And another important aspect is about the time, because हमारे टाइम पे competitive exams जैसे state entrance were not that तभी what पूरा उस पे क्या बोलते हैं पूरा there was a confusion कि बोर्ड एग्जाम का वेटेज होगा या एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज सबसे ज्यादा होगा. And when it comes to entrance level exams, I am sure this time factor plays a very important role कि तुम कितने कम टाइम में सबसे मुश्किल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके. And then with this jargons जो अनीस भाई यूज करते हैं when it comes to mathematical problems, this really helps a lot, to save your time on these competitive exams. And when I see today कि जिस तरह के एग्जाम्स है, not even in India but also outside India, more than how quickly you are able to solve these problems, तुम्हारा thinking capability, your logical reasoning and your analytical thinking, ये जो तीन चीजें that should be built up from the very base when a child is in a school. And I think we are going on a I mean especially in India we are going on a very right track, changing the education pattern, जितना हो सके तुम aptitude बच्चों का build up कर सको. And so this is how Bhaiya helped me to reach where I am today. I mean not even directly as well as indirectly. Tell Arvind, what are you doing right now? Let the people know about it. Where are you and what are you working as? So that right from that, College of Engineering, Pune. Yes, sure. I mean for me, I had very clear goal in my mind, that तभी mathematics था, physics था, biology था. But हमारा जो school था, that was a technical school. JNPT, it was a technical school. And that itself, gave me the motivation कि चलो हम engineering side में ही जाएंगे. So I narrowed down my options. I just skipped my biology during 11th, 12th, and मैंने एक गोली रखा कि engineering में ही जाना है.
And then keeping this into my mind, I was able to also get good score in my 12th standard and also the entrance exam, the CET exam. So with this score, I was able to get into COEP, which is in fact even now that the prestigious school, engineering school in Pune, and it is also known, you know, all over the world. COEP का नाम दुनिया में हर जगह पे, हर कोई यूनिवर्सिटी in भले यूरोप में रहे या यूएस में रहे, they know कि बाबा COEP has very good prestige, especially University of Pune in on उसमें से भी. So my goal was that, you know, to get into COEP, and after that we will see. तभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाके मेरा मास्टर्स करूंगा या फिर बाहर सेटल होना. You know, it was a very vague picture. But you know, when you go to COEP, everyone is preparing for GRE, GMAT. किसी को MBA करना होता है, किसी को GRE करना होता है, किसी को कोई लोग UPSC पढ़ते हैं. But I mean, even that time, you know, it was not easy for middle class family for the children to send abroad to USA specifically. You know, the fees are very extremely high in US. But Europe में, you know, that time it was not a trend कि बच्चे जाके यूरोप में, जर्मनी में पढ़े या फ्रांस में पढ़े, क्योंकि language barrier आ जाता है. And this is also one point which I would like to stress कि, but you know, right from which the school age, भले तुम कौन से स्कूल में रहो, स्टेट बोर्ड में रहो, CBSE बोर्ड में रहो, I would recommend all the students to, you know, to learn at least one foreign language. जर्मन रहे, जापानीज रहे, फ्रेंच रहे. आई एम श्योर पुणे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते होंगे अभी. और इस क्लासेस स्टार्ट कर रहा है अरविंद. that's अनिश क्लासेस स्टार्ट कर रहा है फॉरेन लैंग्वेजेस. That is very good way. And so coming back to, I mean, my decision to switch, consider Europe and not US, was that COEP में we had a exchange program with one of the university in Germany, and this helped me, you know, to do some research कि बाबा देखते हैं जर्मनी में क्या opportunities है. हमारे टाइम पे हार्डली बहुत कम बच्चे थे कि जो यूरोप जा रहे थे मास्टर्स के लिए. बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज प्रोग्राम, एंड आई एम श्योर अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं पुणे में जिनका एक्सचेंज प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में. एंड विद दिस यू गेट एन आइडिया कि बाबा जर्मनी में क्या डिफरेंस है, हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज ओवर देयर. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, you know, when it comes to expenses, you will be surprised to know कि जितना तुम पैसा इंडिया में डालते हो बैचलर्स में, उससे कम पैसे में आपका मास्टर जर्मनी में हो सकता है. ट्यूशन फीस पहली बात तो होती नहीं है जर्मनी में. Second of all is, you know, the children or the student himself is able to do some kind of job at the university जिससे उसको पैसे भी मिले. तो भले ही आपने लोन लिया होगा मास्टर्स के लिए, बट विद इन अ ईयर आप पढ़ाई करते टाइम ही वो लोन को पूरा वेव ऑफ पूरा रीपे कर सकते हो. तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यू नो चिल्ड्रन ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू यूरोप फॉर देयर मास्टर स्टडीज. एंड also the, you know, the way to get into Europe, हमारे टाइम पे as there was less students coming to Europe, तो तभी क्राइटेरिया थोड़ा कम था. you know, तुमको GRE की जरूरत नहीं थी, GMAT देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ TOEFL, ये एक just it's a simple language, you know, test your English skills, speaking, reading, writing and listening. That was the basic requirement, and your तुम्हारा bachelor's का score. But अभी जैसे यूएस में से बहुत सारे लोग दे आर स्विचिंग टू यूरोप, तो दे नो दे हैव उन्होंने तो उनका क्राइटेरिया दे हैव इंक्रीज्ड अ बिट, बट स्टिल इट्स रिकमेंडेड कि तुम जीआरई दो. दैट इज रिकमेंडेड बट नॉट अ मैंडेटरी. अगर तुम्हारा बैचलर्स में स्कोर अच्छा हो तो दे कंसीडर दैट एज अ गुड क्वालिफिकेशन एज वेल. एंड यू नो दे डोंट, ऐसा नहीं कि हम इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज है फॉर स्पेशली जो साउथ में जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे बच्चे गेट, यू नो, 95 percentile or something like that, which is very difficult to get from Pune University. But this factor, you know, all the universities, भले अमेरिका में रहे या यूरोप में रहे, they know कि बाबा जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का जो स्कोरिंग पैटर्न है, that is different. So you know they don't, you know, they make a fair scale for everyone, all the students who are coming from India or from any other country. So you should be you know, fair and, you know, also try out these opportunities जिनको foreign abroad में exposure लेना है engineering में, especially engineering में. I would say medical में I would not recommend people students to go to Europe, but those who wants to explore engineering especially, I would strongly recommend कि if anyone is able to afford, okay, he should give it a try. And also the examination pattern, अभी जैसे भैया का और एक जो टीचिंग टेक्निक था जो which I find it useful even now,
because Germany में जब you go for a master's exam, sometimes it's a open book exam, it's relative grading, and even if it's an open book exam, there are some it's all depends on the professor. So it can happen कि एक प्रोफेसर ने बस एक ही क्वेश्चन पूरे 100 मार्क्स के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन डालता है, और वो एक क्वेश्चन इज he just wants to skill कि स्टूडेंट्स का अप्रोच कैसा है. He doesn't expect कि तुम्हारा आंसर बराबर है या नहीं. He just wants to see कि बच्चों का स्टूडेंट्स का अप्रोच कैसे. It's a very high level problem he will set. You use all the resources what you have. You can take a calculator, you can take mobile, you can take open book, whatever you want. But तो तुम्हारा basics should be strong, and your logical reasoning, your aptitude, everything comes into picture when you are in a position to solve this kind of problems. So you should be able to build all this kind of skills at this age, especially when you are in school. That's what I feel. Also want you to speak about your electrical engineering. What are you doing right now? What are you into? Yeah, The sure. students should be motivated. Yeah. Exactly. So जैसे I told you कि I narrowed down my options right from the 11th 12th कि I had to do my engineering. तो मैंने COP में भी मेरा स्कूल में मेरा इलेक्ट्रिकल था. हमारे JN Petit में there was used to be 2 technical subjects, mechanical and electrical. तो मैंने तभी इलेक्ट्रिकल ही चूज किया था. उसके बाद I continued on the same field in COEP, electrical engineering, and then also when I went to masters, there also I chose electrical engineering. But when you go to masters, you have to narrow down your specialty or your specialization. So that time तो हमारे में options होते हैं, power systems होता है, high voltage engineering होता है. So I was more keen into power systems because that is the जो अभी electric cars आते हैं, hybrid cars आते हैं, या फिर तुम्हारा renewable energy आता है, solar energy, wind energy, all this comes under power systems. So अभी तक all the latest research because जो high voltage रहा या conventional terms है electrical engineering में, those are already well developed, and there is nothing much okay, there is always some research happening in all the fields, but especially when it comes to power systems, you have a lot to explore in that, because this is going to be the future. All the electric vehicles, this is going to take over the conventional fuels, the तुम्हारा petrol, diesel. So you have to think about the future, 10 to 20 down the line कि क्या future होने वाला है, and then accordingly you choose your specializations in that if you want to do your masters. And so now I'm working basically I'm working in Switzerland. So I did my masters in Germany, then I moved to Switzerland. So again, I changed right now it's my third country. So ये मेरा career रहा एक side में, but when you change the country, so even you get to learn different cultures, how you get to know different people from different country. This is also something interesting. And when you live in hostel, of course India maybe there are many students who live in hostel, but when I moved to Germany, it was my first time that I was living away from my parents. But अभी मुझे कभी वैसा homesick वाला feeling कभी आया नहीं. In fact, you get to learn cooking, तुम्हारा कर सकते हो, you manage everything by yourself, and this also increases your self-confidence in some way or the other. So this is what I would like to say. What I would like to add for Arvind is, if you see his graph, even 10th standard JNPT he had stood first. तो हमको टेक्निकल सब्जेक्ट होता था, मैंने तो वेल्डिंग किया था, तो अरविंद ने शायद इलेक्ट्रिकल किया. उसके बाद 12th में भी COEP में उसने इलेक्ट्रिकल ही चूज किया. उसने अपना इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रिकल में किया और मास्टर्स भी इलेक्ट्रिकल किया. देन ही स्विच्ड ऑन टू पावर सिस्टम. So I always say this dialogue, मेरा फेवरेट डायलॉग है, specific is terrific. Please write it down in the chat box, boys. This is for you. So you have to be very specific to be terrific. अरविंद वो एक्सपीरियंस बता ना, जो आप फिजिक्स के सम्स करते थे. बुक का नाम मालूम है? देखो, NM मिस्त्री, SY गंभीर. हाँ, वो बता. मतलब वही physics, as I said, physics was one of my favorite topics, including mathematics. The reason behind that, you can explore, you can twist the question. तुम तुम्हारे स्टाइल से क्वेश्चन को चेंज करके you can make your own question. So physics was something, and the where you can apply that knowledge even to some real situation in your life, which also I would like to advise many students कि तुम्हारे आजू बाजू में जो भी चीजें होती है, try to think that कि उसके पीछे का physics क्या है, उसके पीछे का science क्या है. It comes to surface tension, फिर levitation, magnetic levitation, जो भी है,
physical terms थे, YouTube में भी डालो, chat box में भी डालो, YouTube पे. so all these physical terms try to correlate in try to correlate that to your physical world, कि मेरे आजू-बाजू में जो चीजें हो रही है उसके पीछे का physics क्या है. So, this will help you understand, or not more than understand, I will say it will make you more interested. It will make you more motivated to to go into detail, or go more deep into physics. And तो भैया का एक था कि भैया used to make students solve बहुत सारे problems solve करो, but it was just his idea to, I mean, it was कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े उसमें, बच्चे खुद होके सॉल्व करें, उनके खुद के मोटिवेशन बढ़े कि कैसे बच्चे are able to solve all the problems by themselves within a specified time. So that was his main intention behind getting all the resources and making them available for the students. So I remember there used to be many textbooks from CBSE के board के रहे, हमारे state board के books रहे, and he used to make sure कि सारा knowledge is able, we are able to gather at one particular place and get all the information from that. One more thing, the last question, Arvind, in fact, if you have time, how are you connected to Elon Musk? Because Elon Musk is very famous in India. All my children, SPI, they know about the things that you're doing, common things, if you can share. Okay. So Elon Musk, and also tell about Elon Musk, what he is doing and what you are doing. So Elon Musk, as you must have read, many of you must have read about him. He is the one, he thinks out of the box, and his basic, if you have read any of his press conferences or any media conference, you will see that main thinking behind this out of ideas is he stands he focus on the basic principles. So if you try to understand or read any of his media, this sentence, that basic principles, he will always focus on that. So basically, Abhi, he's working into, he's planning to prepare the humanity to protect the humanity against some kind of apocalypse or some kind of mass extinction, which for a normal entrepreneur or any kind of business, they will not think about it. But he's one, he wants to prepare the world for that. So what he is doing, one of his company is SpaceX, which is planning to take to relocate all the humans to Mars at some point. In fact, he has already he's getting many fundings for that. He's preparing spaceships or rockets which will one day take all the humans to Mars in case there is a apocalypse on the Earth. This is one thing what he has done. Or another thing what he has done, to use rockets, to reuse the launchers for the rockets. So पहले क्या होता था, कोई NASA या फिर हमारा ISRO रहे जो rocket launch करते थे, उसके जो launchers थे, it was like one time use. तो एक बार उनका ऊपर जाते तो it was gone. But what Elon Musk tried to do is, how can I reuse those launchers? Because so he made a very fantastic. If you just try to search on YouTube, उसका जो video है, reusing the launchers for the rockets. तो जो rockets तुम्हारे Earth station से space में जाता है, और if it goes to any other planet, so after reaching a specific altitude, that launches, they get separated from the main satellite body, and वो rocket वैसे ही तरह उसी जगह पे आके land होता है जहाँ पे उसको launch किया था. So in that way he's able to use the same launchers for his future rockets. तो इस तरह से तुम्हारा costing भी कम होता है. So this was his second interesting idea. And third, of course, everyone knows that the cars about Tesla, the electric cars. So he was the first ones to have this electric cars, and of course there are many he started with many prototypes. लोग बोलते थे कि जो बड़े companies है, BMW रहे, Mercedes रहे, Volkswagen रहे, उन्होंने भी इतना electric cars में invest नहीं किया जितना Tesla ने किया. Because Tesla knows that this is going to be the future. So why not I invest all my resources in this field? So now, looking at Tesla, even BMW has started investing more into electric cars.
but these big companies are still behind the race when you compare that with Tesla. So he's taking the right decision at the right time, and he's thinking 30 years down the line or 40 years down the line कि सच में society में क्या use होने वाला है. And when it comes to electric cars, this is also where I work into. कि हमारा जो company है, we also, because Switzerland में specific, not even Switzerland, जो Europe है, जहाँ पे there is the highest number of renewable energy production. Solar से रहे, wind से रहे, hydro से रहे. This is only happening more in Europe. And also दो जो electric cars के जो deployments है, if you see, I mean, अगर अभी पता नहीं आपने कभी देखा होगा वीडियो पे या कहीं पे भी फेसबुक पे, on every highway there is a specialized track, only meant for electric cars. Or there are this how do you call it, जो हमारे metros, not metros, जो trams होते हैं, तो there are the specific lanes on the highways as well, जहाँ पे तुम्हारे electricity से चलने वाले trucks रहे या cars रहे, तो यहाँ पे all real time in real life you are able to see कि कैसे work हो रहा है this model. Of course this is not on a full scale, but all these developed countries are moving in that direction. And of course India may, when anyone of you wants to go in the engineering field, especially electrical, you should keep this as a this renewable energies or battery systems तुम्हारा main interest. I suppose physics में तो हमारा ये topic था ही, battery cells. So try to gain all the basics clear, get all the basics clear regarding the physics, because not necessary it's useful in electrical, but of course mechanical में it comes into a picture in every field. So जितना तुम्हारा अभी school में तुम्हारा basics clear होगा, physics, mathematics, chemistry as well, those who wants to go into biology or medicines. So try it and see कि तुम कैसे तुम्हारे इस time पे तुम्हारा basics clear करें. And with this you will be, I'm sure every one of you will be able to prosper in whichever career you choose. Of course I'm talking more into technical fields, but हमारे time पे जो ये UPSC exams रहे, civil services रहे, I mean frankly speaking मुझे I didn't get that kind of information or exposure from my parents कि बाबा ऐसे भी career हो सकता है. But given a choice, if someone asked me, would you like to change your career, probably I would say yes. I would probably have gone for a UPSC as well. Because that is the most respective field if someone wants to make the career in India. So that's what I would like to say. In fact, that is our ultimate aim, Arvind. Somebody who's not able to join NDA after 12th or after CDS, we feed him so many things that we are also teaching them history, civics, geography, current affairs. Our CAT teachers are also online. So ultimate aim is that because the success ratio is only 1%, if these people are not able to crack defense competitive exam, we feel that either they should serve railway or they should serve the defense UPSC. The best aim is to become an IAS. But even then, other than IAS, there are a lot of things like SSC, CGL, or any other exam they can crack and join the Indian government and serve the nation. One more question that I asked to ask Arvind all the time, one of my favorite questions, which came into my mind is Chandal Chokadi. Since he told me that Tesla is the company owned by this guy Elon Musk, anybody who can tell me on the chat box Tesla का दूसरा यूनिट क्या है? टेस्ला किसका यूनिट है? फिजिक्स में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट टेस्ला है? चैट बॉक्स में कौन लिखेगा? मेरे तरफ से इसको चॉकलेट मिलेगा. मैं कभी चॉकलेट नहीं देता था, चौक को लेट देता था बच्चों के हाथ में. अरविंद इज टू कम एंड सॉल्व ऑन द बोर्ड. तो वो बोर्ड पे मल्टीपल बोर्ड का कंसेप्ट काफी काम आता था बच्चों के लिए. स्पेशली क्लास के अंदर क्या होता है, हर क्लास में कोई हरमियोनी होता है, जैसे सरजील सर बोलते हैं. तो जैसा अरविंद इज वाज वेरी गुड, तो अभी उसका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए था. तो मैं क्या करता था क्लास में, जो ब्लैक बोर्ड्स होते थे वो ब्लैक बोर्ड्स पे उसको सम्स करने लगा था. तो मल्टीपल बोर्ड ये इंटरनेशनल कंसेप्ट अभी बना, अनीस क्लास में बहुत पहले से था. वेरी गुड ऋतिक निकम. मैग्नेटिक इंडक्शन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला है, तो टेस्ला और मैग्नेटिक इंडक्शन का और कौन सा 4 यूनिट हो सकते हैं? एक यूनिट टेस्ला हो गया, दूसरा अरविंद चेक करा, मैं तेरे को भी यही क्वेश्चन पूछता था मैं. टेस्ला एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट कौन बताएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर. ऋतिक निगम वेरी गुड. तीसरा कौन बताएगा? एनीबडी? 4 चांडाल चौकड़ी बोलता हूं मैं इसको. चैट बॉक्स में, यूट्यूब में. गॉस नहीं होता है, गॉस गलत हो गया. गॉस होता है क्या अरविंद? मेरे को भी मालूम नहीं, मैं बहुत दिन से फिजिक्स नहीं सीखा रहा, आजकल मैथ्स से सीखा रहा. रीड ऑफ द डे.
सर रिपीट करो ना, मैं ये बोल रहा हूँ मैग्नेटिक इंडक्शन के क्या क्या यूनिट्स है। एक राइट आया टेस्ला, दूसरा आया वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एनीबॉडी? मैं हिंट दूं क्या? हिंट ये देता मैं तो देखो फिजिक्स में हमेशा मेरा डायलॉग था, अरविंद को याद रहेगा, कि मैथ्स का टीचर फिजिक्स सिखा सकता, फिजिक्स का टीचर मैथ्स से सिखाता। मैथ्स भारी है कि फिजिक्स भारी है, तो बच्चे लोग बोलते थे मैथ्स भारी, क्योंकि मैथ्स का टीचर फिजिक्स सिखा सकता था, फिजिक्स का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। वेबर पर मीटर स्क्वायर आया। देखो एक यूनिट, एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू BIL, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। F इक्वल टू BIL लिखो ना। देखो मैथ्स इन्वॉल्व है फिजिक्स में, तो B इज इक्वल टू F अपॉन IL होगा। और फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और करंट का यूनिट एम्पियर है, और लेंथ का यूनिट मीटर है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी हो सकता है। जिसने अगर ये लिखा ना, उसको मेरे तरफ से गिफ्ट है, अगर किसी ने न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखा रहेगा तो। अगर नहीं लिखा है तो समझ लो JEE पास नहीं होगा। पढ़ने का तरीका नहीं बच्चों को, क्या बोलेगा? लिखा क्या न्यूटन पर एम्पियर मीटर? नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। अभी लिख रहा है, अभी ऋतिक निगम चौथा समझ के लिए चौथा, ये किसी को नहीं आएगा। है कोई माइकल लाल जो चौथा वाला बताएगा? देखो ये JEE में आया था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर, तो ये जो ऊपर का जो न्यूटन मीटर है ना, वो जूल हो जाता, और नीचे एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो चौथा यूनिट लिखो, जूल अपॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पढ़ने का तरीका है। फिजिक्स के टीचर को भी मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसा पढ़ाया जाता, बच्चों को इन्वॉल्व करो। अभी 4 चीज मैंने बताया, ये जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर JEE में आया था। हाँ, तो ये हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, जैसा अरविंद ने बताया, उसका एनालिटिकल स्किल, उसका क्रिटिकल थिंकिंग, उसका एप्टीट्यूड, उसका लॉजिक, ये सब डेवलप करेंगे ना, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेगा। उसने बताया ना, उसके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जर्मनी में एक ही क्वेश्चन पूछेगा जिसके ऊपर पास हो सकता हो। तो ऐसे चीजों को हमको प्रिपेयर करना चाहिए बेसिक के लिए। अच्छा, एनीबॉडी? अरविंद टाइम है ना, कुछ क्वेश्चंस पूछना बच्चों को। नहीं, और एक इंटरेस्टिंग, जैसे आपने ये जो एक क्वेश्चन की जो बात करी मैंने, जो ये प्रोफेसर ने कहा, वो एक क्वेश्चन में आपके सारे, आपका फिजिक्स भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है। मतलब अगर इफ आई रिमेम्बर दैट क्वेश्चन, तो इट वाज अ रिन्यूएबल एनर्जीज का एक क्वेश्चन था वो। बट उसमें क्वेश्चन ऐसे था कि तुम्हारे अर्थ पे एक सोलर पैनल है, और तुम्हारे मून पे एक मिरर रिफ्लेक्टर है, एंड somehow you need to calculate, अभी I don't remember the question exactly, कि तुम्हारे अर्थ से जो मून पे जो लाइट गिर रही है, then depending on the reflection, तुम्हारे अर्थ पे कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है, and how is that utilized. So you know, तुम्हारे उसमें you have to consider all the mathematical equations, all the physical constraints, and okay, तुम भले ऐसे हो सकता है किसी को perfectly पता नहीं है कि बाबा डिस्टेंस कितना है, it's fine, you assume things, but you assume some things, but go in a correct approach. So that is what the professor would like to see, what is the method. So it's very important कि तुम्हारा अगर basics clear हो, so you can tackle any difficult questions in a right way. इसी को हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। ये इंटरनेशनल कंसेप्ट जो अभी अरविंद ने बताया ना, जो अभी अनीस क्लास में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, कि 5 बच्चों को ऐसा क्वेश्चन देना जिसमें अलग अलग कंसेप्ट इन्वॉल्व हो, और वो बच्चे ग्रुप बना के उसको सॉल्व करें। इसको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, पर्पस बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। तो ये चीजें अभी हमने अरविंद इंट्रोड्यूस किया है, और हो रहा है प्योर लर्निंग के नाम पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं। चाहे वो बच्चे का आंसर रॉन्ग होगा। कभी एक सम देखा मैंने, इंटीग्रेशन और कैलकुलस यूज करके एक 5 स्टार होटल का स्विमिंग पूल बनाना है, कैसे बनेगा? तो ये चीजें अभी मार्केट में आ रही है, जो लॉकडाउन के बाद पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी पता नहीं है। क्रेडिट सिस्टम आईवी लीग में कैसा होता है, मैं बच्चों को बोलता हूँ आईवी लीग समझ में नहीं आता, लेकिन मैं सारा अली खान का एग्जाम्पल देता हूँ। वो सैफ अली खान की बेटी, उसने 3 साल का कोर्स 2 साल में पढ़ के आई। तो क्रेडिट पॉइंट्स पे कैसे पढ़ना, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे भी सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लुक एट हर लैंग्वेज, लुक एट द वे शी स्पीक्स इंग्लिश। तो ये प्रोफिशिएंसी तब आएगा जब बच्चे उसके ऊपर मेहनत करेंगे। अभी सोशल मीडिया एग्रीगेटर है, ये बहुत अच्छा टीचर है, तो हाउ टू मेक बेटर यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये भी बच्चों के सामने और पेरेंट्स के सामने आना चाहिए। हमारे अल्ताफ सर है अरविंद, गैट पढ़ाते हैं, मतलब यूपीएससी के लिए, तो वो बात करना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सरजील सर प्लीज अनम्यूट अल्ताफ सर। ऑलरेडी अरविंद यू हैव टाइम नाउ? हाँ बिल्कुल। हाँ सर। हेलो
आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, थैंक यू फॉर सरजील सर, आप खुद और अरविंद सर, काफी अच्छा। अरविंद सर की बात सुनकर तो मुझे काफी इंपॉर्टेंस, मुझे कुछ लगा कि बोलना चाहिए आप, जिस तरह से वो यूपीएससी की बात कर रहे थे। अब मैं यूपीएससी के लिए भी पढ़ाता हूँ यूनिक एकेडमी में, तो मैं कुछ बातें बता सकता हूँ इसमें कि जब मैंने एनडीए के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था और जब मैंने एनडीए में रिसर्च किया उसके क्वेश्चन पेपर को, उसके सिलेबस को, तो आई फाउंड मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन एनडीए एंड यूपीएससी। ठीक है, अब सिंस एनडीए एक 10+2 के लेवल का एग्जाम होता है और यूपीएससी डिमांड करता है एटलीस्ट ग्रेजुएशन, तो एटलीस्ट उस उतनी डेप्थ में सिर्फ डिफरेंस है उनके। ठीक है, क्योंकि एनडीए में 10+2 होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पर पूछा जाता है। यूपीएससी में थोड़ा सा लॉजिकल एनालिटिकल बेस होता है, ठीक है, जिस पर एनालिसिस रिक्वायर होता है। प्रोवाइडेड जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट लगभग सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग बता रहा हूँ मैं, नॉट एग्जैक्टली, सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में भी और एनडीए में भी। सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मगर जो बेसिक सोर्सेस हम इस्तेमाल करते हैं एनडीए के लिए और यूपीएससी के लिए, जैसे एनसीईआरटी के बुक्स या फिर फिजिक्स के बुक्स या सॉरी ज्योग्राफी के बुक, हिस्ट्री के बुक्स, ये काफी सिमिलर है मुझे दिखाई दिए। क्योंकि मैं दोनों तरफ पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये सिमिलरिटीज दिखाई देती है। और जैसे अरविंद सर बता रहे थे कि एनडीए के स्टूडेंट्स को हम अगर जैसे भैया ने कहा कि अगर वहां पर नहीं सक्सेस हो रहे हैं एनडीए में, तो आगे चल के वो ये करियर भी परस्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार क्लास में किसी स्टूडेंट को पूछा भी था कि आप में से किसी का कोई प्लान बी है क्या? ठीक है, तो मुझे एक दो स्टूडेंट ने बताया भी था कि उन्हें आईएफएस परस्यू करना है अगर इफ नॉट सक्सीड इन दिस एनडीए एग्जाम में। ठीक है, वो मैंने जानबूझकर पूछा था क्योंकि मुझे पता था कि ये अगर मैं जान लूं कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो अपने प्लान बी को आईएएस या आईएफएस के तौर पर देख रहे हैं, तो मैं उन पर कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर फोकस कर सकता हूँ, राइट। और ये काफी जरूरी है। देखो, हम वो चीज करा रहे हैं स्टूडेंट से अभी इस लेवल पे जो काफी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यूपीएससी में अगर जो आप सक्सेस रेशियो देखेंगे तो उन स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है जो अपना यूपीएससी प्रिपरेशन अपने 10 से ही शुरू करते हैं या फिर अपने 10+2 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो एनडीए के स्टूडेंट एनडीए पर मिस कर रहे हैं और आगे चल के उनको आईएएस आईपीएस अपना परस्यू करना है, they definitely have an edge over other students who starts their UPSC after their graduation or post graduation. ठीक है, इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जॉब करके ऐसे परस्यू करते हैं। सब फॉर सपोज 14-15 के अगर कुछ टॉपर्स देखोगे आप, मुझे उसका नाम ही याद आ रहा है एग्जैक्टली, इकोनॉमी उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, वो यूएस में काफी अच्छा जॉब करता था। ठीक है, काफी ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो फेसबुक में यहाँ वहाँ एम्प्लॉयड थे, वो अपना इतना बड़ा पैकेज का जॉब छोड़कर इंडिया आए और उन्होंने वहां पर यूपीएससी परस्यू किया, और उनमें से एक तो ऑल इंडिया रैंक 1 था। ठीक है, जैसे अरविंद सर बता रहे थे कि जैसे अगर वो अभी पूछे जाए तो अरविंद सर जैसे सोचने वाले हैं, ऑफ कोर्स वो आते भी है और अपना पूरा करियर छोड़कर और यूपीएससी को परस्यू करते हैं। सो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे कि नॉट फ्रॉम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर सर्विंग इन पर्टिकुलर फील्ड वो वहां से भी वापस आ जाते हैं और यूपीएससी को परस्यू करते हैं। तो मेरा बस ये कहना था कि डेफिनेटली एनडीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफी बड़ा एज होता है और अदर स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू द अपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी इन फ्यूचर। बस यही कहना था मुझे। उसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी तक तो मार्केटिंग नहीं किया, लेकिन अभी मैं समझता हूँ जरूरी है। अभी मुंबई का जो कस्टम का कमिश्नर है वो अनीस कुट्टी का स्टूडेंट है। अभी पवार करके बच्चा है, उसने आईएएस क्लियर किया है। अजित शिरसागर करके लड़का है, उसने आईपीएस क्लियर किया है। एक कुणाल पवार करके बच्चा है, वो एफकैट क्लियर किया है। ये बच्चे मेरे पास एनडीए में थे, एसएसबी में क्रैक आउट नहीं कर पाए, लेकिन आगे चल के उमेश करके लड़का एमबीबीएस जो बीजे मेडिकल से किया, लेकिन आज वो कस्टम का कमिश्नर है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। और ऑन एवरेज मैंने 300 बच्चे पढ़ाए और मैं अभी 33 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने बच्चे पढ़ाए होंगे। ये सब अपने अपने अच्छे अच्छे जगह पे है। तो मैं अरविंद को थैंक्स बोलता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे आइडिया मिला कि मैं रोजाना हमारे लेक्चर में किसी एक स्टूडेंट को लाके बात करूंगा और उसको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगाऊंगा। इससे काफी फर्क पड़ेगा, लोगों को एक हौसला अफजाई भी होगा। Anybody wants to ask something to Arvind? He's on the line. If anybody is there, any question that you have to ask him, please raise your hand or write on the chat box. Sir, देखो. Alvin Shinde. Yeah. Sharjeel. Yes, Sharjeel. एक सेकंड, Alvin, I'm trying to unmute you.
And Okay. Srivardan, I'm unmuting you. किसको? Srivardan raised her hand. उसको कुछ question था शायद. Srivardan. Srivardan. Yeah, Srivardan. Ask. Sir, I want to ask. Loudly. I want to ask, as Sir Sharjeel sir told about KVPY and IISER. So KVPY का कितने चांस होते हैं? जैसे NDA में 3 चांस होते हैं, तो फिर KVPY एग्जाम देने के कितने चांस होते हैं? KVPY में जैसे मैंने आपको बताया, आप 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और FY ये 3 बार दे सकते हो. Okay, sir. थैंक यू. हाँ वो है ना एक अब्दुल रहमान, उसको बात करा था ना, उसको अनम्यूट करो. हाँ? अंश श्रीराम. हाँ अंश. हाँ अंश को अनम्यूट करो ना यूट्यूब पे. अच्छा बहुत सारे यूट्यूब पे. ये उसको अब्दुल रहमान को चांस है ना, उसको कुछ पूछना था. कहाँ है अब्दुल रहमान? उसको अनम्यूट करो सर. कहाँ देखो? अब्दुल रहीम सैयद. हाँ अब्दुल रहीम सैयद नहीं है, क्या नाम था सर उसका? विजन एकेडमी से उसका. देखो हाथ रेज कर अब्दुल रहमान, अगर कुछ पूछना है तो. If somebody wants to ask, please raise your hand. If anyone has any question, please raise your hand. Not in the video. There's an option in your reaction side made to raise your hand. कहाँ गया अब्दुल रहमान? नहीं है सर. हेलो भैया, या मुझ पे एक्चुअली जूम पे मुझे मैसेज आया हुआ है प्राइवेटली, प्रोबेबली सबको नहीं दिख रहा है वो. सो सम ऑफ अब्दुल रहमान, ही इज ट्राइंग टू आस्क, आई एम करंटली इन द फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड get my bachelor from Germany. I am learning to currently A1. Please advise me, thank you. So are you still there, Abdul Rahman? Maybe you can answer it. No problem. Okay. So yes, I mean, if you are right now in your diploma engineering, I mean there are many students now, when I was pursuing my masters, कि जो बच्चे bachelors के लिए भी Germany आते हैं, you know, but तभी when you are coming for bachelors to Germany, तभी तुमको German language का proficiency होना चाहिए, not A1 but B1. But when you go for masters, तुम्हारा German language is not a mandatory requirement. So even with A1, you can come in. I mean, मेरा भी A1 था, so but it was not a mandatory requirement. In fact, the thing is, when you are doing your masters in Germany or anywhere else in Europe, language learning is something made mandatory in your first 2 semesters. So तुमको भले ही तुमने जर्मन पढ़ के आए हो या नहीं, तुमको वहाँ पे जाके जर्मन पढ़ना ही है. And you know, it's a very different atmosphere. It's a very different way of learning the language when you are physically there in that culture. So you learn it even more quickly when you travel to Germany or France or anywhere in Europe. So I mean, that's what I can advise when it comes to language. If there are any specific question, like say which university or which engineering you want to go in, you can write a message to me. This Thank you. Swati Kothari, she wants to ask something. I'm unmuting her. Yeah. सर हाँ बोलना था. सर AVPY का डेट कब तक है फॉर्म भरने का? KVPY का? हाँ. KVPY का इस साल का चालू नहीं हुआ बेटा, वो जुलाई में आता है, जुलाई में चालू होता है. ओके ठीक है सर. और स्टैंडर्ड्स आपने 11th 12th और 12th प्लस बोला ना? 11th 12th और FY. अच्छा अरविंद. हाँ भैया. मेरी एक टीचर है अजीता नायर, शी इज अ प्रिंसिपल इन स्कूल. On the YouTube, she's on YouTube. She's asking, today's youngsters experience boredom easily. Are you able to hear me now, Arvind? Yes. She's asking, today's youngsters experience boredom easily or hesitate to dedicate more time to achieve something. जैसा बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को भी पहले से करता, मैं कभी छुट्टी नहीं देता ना, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कौन पढ़ता है क्या, you know, that kind of thing. Yes. I request you to suggest children how to develop passion for the dream. अपने ड्रीम के लिए पैशन कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में थोड़ा बात करो, ऐसा उसका रिक्वेस्ट है.
Okay. और So, रुद्रेश पाटिल का क्वेश्चन है यूट्यूब पे mhm. कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी व्हाइल स्टडीइंग अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा बाकी का भी जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना पड़ता था, उसको कैसे हैंडल करता था? आई थिंक यू कैन रिप्लाई द फर्स्ट वन. Sure. I would be glad to answer this question. I mean, exactly. I was in the same scenario when I started going to class. कि तुम दिन भर how can you keep your interest in that subject? But that really depends on how the person or how the teacher is teaching. सिर्फ तुम्हारे पे depend नहीं होता है. It also depends a lot on who is teaching you. Of course, तुम्हारे इसमें self motivation रहना चाहिए. In my case, when I say that my physics and mathematics were my favorite subjects, of course उसके पीछे बहुत सारे reasons थे, because these were the subjects where you can where you can play around with the problems. So I had this kind of thinking in my mind कि मुझे थोड़ा problem को twist किया तो क्या हो सकता है. So I was always keen and eager to solve more and more problems. I mean, even the same problems, but by changing some parameter into it. So to make it more interesting, अभी जो आपने question पूछा coming to specific कि boredom कैसे हटाया जाए, I would say for them to अभी बहुत सारे experiments. I mean, you can make some home experiments, try to see the physics behind it. तो ताकि बच्चों को लगे कि इसके पीछे का reason क्या है, what is the physics behind it. Mathematics के केस में I mean, of course, it's more to do with the numbers, but really it depends on how अगर तुम्हारा inner confidence बढ़े तो I am sure ये तुम्हारा जो boredom है, बच्चों का जो boredom है, ये automatically चला जाता है. In my case, for me, I mean, the motivation was the atmosphere in the class. जो भैया की क्लास में जो atmosphere होता था, there used to be not इतना serious atmosphere कभी नहीं था. तो भैया made sure कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा रहे, but पढ़ाने का जो तरीका होता है, how it can be made more interactive. और ऐसा नहीं कि जो पढ़ाकू बच्चे वही जो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं था. I remember जो भैया पीछे मिलते थे, जो मस्ती करते थे हमारे क्लास में बच्चे, वो भी इंटरेस्ट से कैसे आगे आके प्रॉब्लम सॉल्व करने की हिम्मत करते थे, या उनमें जो कॉन्फिडेंस अपने आप आता था. So that is really something which came on top when we used to study these subjects. And when it comes to coming to the other question about history, geography, or the languages, I mean, it really depends on the individual choice की. Of course, I mean, हमारे टाइम पे it only motivation था कि कैसे अच्छा overall score लाया जाए. जो हमारे टाइम पे it was 1%, but I suppose now they have there is something optional, right भैया? हाँ भी है, but now अगर यूपीएससी वगैरह पढ़ना पड़ेगा तो सब पढ़ना पड़ता है. हाँ, तो उसको वो मेरा बोलना था ना अरविंद, जो है ना बोर्ड में मोनोटोनिटी नहीं आना चाहिए, टीचर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए. तो उसके अंदर मैं तो समझ रहा हूँ कि अरविंद पैशन चाहिए कि खुद पढ़ना है, मुझे कुछ करना है. तो जब तक वो चीजें नहीं आई ना बच्चों में, तो नहीं कर सकते. और हम लोग ये आइडिया ही हमारा ये है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये केवीपीवाई, IISER, होमी भाभा, ये कुछ नया नहीं है, ये 20 साल पुराना आइटम है. लेकिन हम लोगों ने कभी उसके ऊपर वर्क ही नहीं किया. टीचर्स ने, यूनिवर्सिटीज ने, एकेडमिक्स ने, क्लासेस वालों ने भी, कोचिंग वालों ने भी कभी उसके ऊपर काम नहीं किया. अभी इसको हमको हमारे बच्चों को बोर्डम हटाने के लिए उनको ऐसा कुछ देना चाहिए जो उनको इंटरेस्टिंग है. अभी लॉकडाउन है, 11 का बच्चा बैठा है घर में, बोले मेरा पढ़ाई हो गया, 11 का मुझे आता है, सीबीएसई का भी आता है, आईसीएसई का भी आता है. भाई तो केवीपीवाई देख के देख. मैं एडमिट करता हूँ ऑन यूट्यूब के केवीपीवाई के सम इतना आसान नहीं है, उसको करना चाहिए. उसको अगर टीचर्स ने पहले प्रैक्टिस नहीं किया और तो वो क्लास में कर नहीं पाएगा. तो ये सब चीजें उनको करना पड़ेगा, रिसर्च में जाना चाहिए. तो ये सब एग्जाम देने के बारे में डेट्स है, बाकी चीजें है, उस पर भी वर्कआउट है, क्योंकि अभी सिनेरियो चेंज हुआ है. घर में बच्चों के पास ज्यादा टाइम है, तो पबजी और बाकी वल्गैरिटी के अलावा भी बच्चों के सामने कोई ऑप्शन होना चाहिए. अगर तुम बोलेंगे मैं बच्चों को मोबाइल ले दूं, वो हो नहीं सकता. तो उसको वो मोबाइल का और वो इंटरनेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तब करेगा जब उसका कोई ड्रीम हो, उसको कोई अचीव करना है, उसको कुछ और करना है. जैसे अभी तूने बताया कि तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बाद भी तेरा एक पैशन है कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं यूपीएससी और दूं. तो तेरे में वो क्रेविंग है कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ. हाँ, तो वो चीजें अगर हम नहीं पढ़े, लॉकडाउन में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं रात भर पढ़ता हूँ तो मैं बोर नहीं होता.
मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी जो मैं सीखना चाहिए था पहले, नहीं सीखा, अभी सीख रहा हूँ। तो लर्निंग जो है, लर्निंग का कभी गिरना नहीं चाहिए। तो हम जितना सीखेंगे उतना हमको मजा आएगा। तो पैशन आना ही चाहिए, जिसको हम जुनून बोलते हैं। अगर वो जुनून नहीं आएगा ना तो फिर मुश्किल है। ये मेरा जार्गन है अरविंद। तो जुनून और पैशन हमारे बच्चों में अगर आ गए ना, वो आइडिया भी है, सब क्लासेस बंद करके मैं लेक्चर्स लग रहा ना, तो अक्सर टारगेट ऑडियंस तो स्टूडेंट्स है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं अब लेक्चर के लिए भी नहीं आते। तो डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, घर में प्रॉब्लम है, माँ बाप टॉन्ट करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, तो वो प्रेशर है। माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे 24/7 पढ़े, वो होने वाला नहीं है। आउटसाइड लाइफ नहीं है। तो बहुत सारे थिंग्स आर देयर राइट नाउ आफ्टर लॉकडाउन वेयर द सिनेरियो हैज चेंज्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। देयरफॉर आई हैव आल्सो ब्रॉट इन जिमी, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट। अरविंद, कभी मैंने अपने क्लास में साइकोलॉजिस्ट नहीं लाया था, बट जस्ट शी इज अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हु विल टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट डेवलपिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। उनके अंदर एंथुसियाज्म और उनके अंदर वो चीजें, मोटिवेशन और पैशन डालने के लिए, फोकसिंग के लिए। जब मैं समझता हूँ ना, तेरा जो सक्सेस था ना, वो तेरा फोकसिंग था। जो तूने इलेक्ट्रिकल से तो अपने आप को हटाया नहीं, तो तेरे लिए वो आसान हो गया। तो लोग, बच्चे अगर फोकस्ड रहेंगे, इंडिया का एग्जाम 6 महीने में दे सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता, अगर कोई बच्चा सीरियस है और अनिस क्लास का एक भी लेक्चर मिस नहीं करता, तो वो उसको 4 अटेम्प्ट मिलता है। तो 4 अटेम्प्ट में तो 100% लॉ ऑफ एवरेजेस सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर होता है। तो वो उसका वो बोर्डम से उसका पैशन मेंटेन रखना, ये पेरेंट्स का भी एक इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स अभी, क्योंकि बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे बच्चे आपके घर में, तो अगर बच्चा भी लॉकडाउन में तुम्हारे पास है, तुम उसको मोटिवेट करो, वो करेगा जो करना चाहिए और जो नहीं करना। अभी हमारे यहाँ ना हैंड होल्डिंग क्लासेस है अरविंद, हैंड होल्डिंग। वो बोलेंगे ना मेरे को कुछ नहीं आता, स्टार्टिंग से सिखाओ, तो स्टार्टिंग से सिखाएंगे। ऑन डिमांड क्लास है, अभी डिमांड कर लिया। जैसे मैंने फिजिकल मैग्नेटिक इंडक्शन बताया, अभी कोई मेरे को अगर बच्चा बोलेगा सर मेरे को मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं समझ में आया, मेरे पास 4 टीचर फिजिक्स का, मैं उसको लेक्चर दे दूंगा, चल तू मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ ले वापस से। मतलब जो भी वो बोलेगा ना। अभी फॉरेन लैंग्वेजेस की तो बात किया, मेरे पास अभी लोग लाइन में रुके कि फॉरेन लैंग्वेज सिखाना है, तो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी, लेकिन तेरे बोलने पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अभी ऑनलाइन का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि व्हाटएवर यू नीड अ वेरी गुड रिसोर्स पर्सन, इंटरेस्टिंग टीचर होना चाहिए और बच्चे ऑडियंस होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ लक्ष्मी मैम है, इंग्लिश पढ़ा थी, हम स्पोकन इंग्लिश का नाम से बहुत सारे पेरेंट्स उसके लेक्चर अटेंड करते। एक दिन लक्ष्मी मैम ने एक फोटो भेजा एक पेरेंट का, सर ये भी लेक्चर अटेंड कर रहा है, कौन है? मैं डर गया। तो मैंने जब पूछा भाई ये कौन है, तो देखा कि एक पेरेंट के डैड बैठ के पढ़ रहे। बोले वो क्या करूं सर, हमारा बेटा तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन तुम्हारी मैडम इतना अच्छे से पढ़ा रही है। मैं सोचा कि मैं मेरा अपना इंग्लिश सुधार लूं। तो वो अभी बूढ़ा आदमी है, लेकिन उसको इंग्लिश लिखने का शौक है। तो ये अभी मैं वही बताना, सैटरडे छुट्टी दिया तो कुछ बच्चे एसपीए के लेक्चर में आ गए। बच्चों के अंदर वो चीजें अगर आ गई ना कि मुझे पढ़ना है, तो काफी कुछ कर सकते हैं। Anyway, anything else? Anybody else? Sharjeel, raising the hands. Chaitanya. Chaitanya, where is Chaitanya? Before the question, I would like to add what हाँ, bhai right now is, अभी हमारे टाइम पे we didn't had that luxury of having so much of information, इंटरनेट पे रहे, मोबाइल पे रहे, तभी हमारे टाइम पे नहीं था। तो that time for us it was a bit easy to focus, I mean compared to now I am saying, but now अभी प्रॉब्लम कभी कभी होता क्या है कि बच्चों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे जगहों से मिल जाती है, बट कौन सी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है या क्रिटिकल है। आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी फॉर इन द क्लासेस की वो इंफॉर्मेशन को नैरो डाउन करे, प्रॉपर डायरेक्शन में बच्चों तक पहुंचाए कि बाबा तुम ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करो, तो ताकि बहुत सारे ऐसे भी होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास है और मुझे क्या करना चाहिए। सो आई थिंक क्लासेस में दे शुड टेक केयर ऑफ narrowing down the information and just filtering it out what is important for the child. Perfect. Alvin, I'd like to add to it this a very valid point, because in today's world, there's information overload that the students have access to. I mean, you and me might have accessed a cell phone at what age? Maybe 18, 20, 21, 25. Today, a 3-year-old even has an access to a cell phone. So I think teachers, has a huge responsibility of being able to filter out that information, of funneling it down to the level of the child. So what we are also doing is we are also running teacher training courses, because that is very important in today's days and age. Because when we are talking about a student should have passion, I think a good teacher could even cultivate passion in a student. So that's the second factor where NE's class is also working. We are also working for training of teacher. So I think that would be able to, that filtering or funneling of information, I think that would really help in that aspect as well. Right, Anis?
And coming to the students, तुम्हारा मोटिवेशन कैसे बढ़ाया रहे जाए. अभी कभी-कभी ऐसा कोई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि चलो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अभी ना मुझे सब आता है. So you should never stop there. The world is full of questions, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. You should find all the possible ways कि मुझे और प्रॉब्लम्स कहाँ से मिल सकते हैं सॉल्व करने. You should look for that, you should thrive for that and see कि how you can make yourself thriving for the knowledge in all possible ways. तो कभी you should not satisfy कि तुम्हारा हो गया पढ़ के, ऐसा फीलिंग कभी आना नहीं चाहिए, irrespective of what subject it is. उसके लिए हम दो काम करते हैं अरविंद सबके लिए. एक तो हम लोगों का रोज टेस्ट होता है शाम को और रोज उसका एनालिसिस देते हैं. उसको भी हमने क्लासिफाई किया है कि ग्रीन जोन कोविड के जैसा, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन. जो बच्चे ग्रीन जोन है मतलब वो पास हो सकते हैं. जो येलो जोन है उसको कोशिश करना है कि किस तरह से वो उसको ओवरकम करे, टैकल करे. और रेड जोन अभी अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट में आंसर देना पड़ता है और एक ही आंसर ऑप्शन राइट है जेडब्ल्यू मीन्स में. तो उसके ऊपर भी हम वर्कआउट करते हैं और पेरेंट्स को भी बोलना है कि बच्चे जहां रॉन्ग हो गए उसको टैकल करके करेक्ट करना है. दूसरा, हमने एक बंदी को बिठा के रखा है, हर नेम इज सोनाली. सोनाली मैम, आर यू ऑन द लाइन? शी इज ऑन यूट्यूब नाउ. आई वांट हर टू कम ऑनलाइन. जरा इफ somebody can pass the message to Sonali ma'am, ताई कॉल कर. And she is the one who decimate the information. डेसिमेशन करते हैं कि भाई ये एग्जाम है, ये फॉर्म है. 3 मरतबा व्हाट्सएप में हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं. अभी अमर अकबर एंथनी का नाम हमने चेंज किया. पेरेंट्स को से अमर अकबर एंथनी क्या है, सो दैट बच्चों को इंटरेस्ट है, पेरेंट्स को इंटरेस्ट है. 3 मरतबा उसको व्हाट्सएप करते हैं, उनको लिंक समझाते हैं, उनको 3 मरतबा बताते हैं, तो फिर जाके कुछ ऑडियंस जमा होती है. तो ये चीजें अवेयरनेस क्रिएट करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं. और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंसलिंग. काउंसलिंग में पेरेंट्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1-to-1 में भी आप आ सकते हैं. आप बोल सकते हैं हम आपके बच्चों से बिठा के बात करेंगे अगर काउंसलिंग नीडेड है तो. जिमी, आर यू लिसनिंग? आई थिंक हाँ. शर्जिल, जिमी इज ऑल्सो द लाइन. पहले चैतन्य को बात करेंगे, चैतन्य जादव. And there's also Snehalata. अरविंद, तेरे पास टाइम है ना? देखो हाँ सर, टाइम है. There's 2 people already raised hand. First I'll unmute Chaitanya and then there's one called Snehalata. Okay. Chaitanya, I'm unmuting you. Please accept. Chaitanya. Yes. Yes, Chaitanya. हेलो. यस सर. हाँ सर, चैतन्य का पापा वो. आ जाओ सर, बोलिए ना. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सरजील सर से है. जी. सरजील सर, थैंक यू फॉर सच नाइस लेक्चर. इस लेक्चर में लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया सर कि इसमें हर साल जो होमी भाभा हो या केवीपीवाई या आईसर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना सिलेक्शन होता है सर? सर मैंने होमी भाभा का 10% का ये बताया था. आईसर में परसेंटेज नहीं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30,000 से 50,000 ऑन एन एवरेज एनुअली लिखते हैं. तो अभी फाइनल उसमें से फिल्टर 10% होके 7.5 फिर 10% फिर 10 आते हैं. तो वो एक कैलकुलेशन निकाल के चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा. चैतन्य वैसे डेली क्लास में होता है मेरी, मैं चैतन्य के थ्रू भी कम्युनिकेट, कोई इश्यूज नहीं है. मतलब ऐसा कोई फिक्स फिगर नहीं है उसमें, जितना पार्टिसिपेंट्स है उस पे डिपेंड है. आई मीन स्पेशली केवीपीवाई में ना सिलेक्शन राउंड्स में आते हैं ना, सॉरी केवीपीवाई नहीं, आईसर में, तो वहां पे एक फ्लोट और फ्रीज का भी ऑप्शन होता है. तो उससे काफी सारा चेंजेस होता है नंबर में. वो तो जब जो ग्रुप काउंसलिंग चलता है, जीडी चलता है, तो अगर आपको एक 7 या 6 आईसर में से एक अलॉट किया गया, देन यू हैव अ चॉइस. देयर समथिंग कॉल्ड एज अ सीट रिजर्वेशन फीस करके एक होता है, वो पे करके आपको फ्रीज कर देना या फ्लोटिंग ऑप्शन ऑन रखना है. तो उससे कुछ आ जाते हैं सिस्टम के अंदर. बट एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कहीं मेंशन नहीं था. बट इफ यू वांट आई कुड रिसर्च एंड आई कुड डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दैट. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. एंड सर मोस्ट इंपोर्टेंट इज लेट चैतन्य फिल द फॉर्म. पहला काम आप ये करो, एज एजुकेटेड पेरेंट आपको केवीपीआई का फॉर्म भरवाना है उसका. जी हाँ सर. हम लोग नहीं करते सर, हमारे यहाँ 130 करोड़ भारतीय है, नहीं करते सर. ये 20 साल से पुराना है. अभी केवीपीवाई अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाला था, लेकिन कितने लोग उसका अवेयरनेस ही नहीं है. मैं तो सिर्फ उसका फुल फॉर्म जानता था सर अब तक. हाँ, तो ये सब चीजें सर हम लोगों को करना पड़ेगा अभी लॉकडाउन के बाद. तो ये बच्चे को अलग अलग चीजें सर, ये अलग अलग फ्रूट्स है, लेकिन है वही फ्रूट है. अगर आपका बच्चा केवीपीवाई पे पढ़ रहा है तो भी एनडी के लिए पढ़ रहा है. अभी मैं आपको कमर्शियली मैं क्लास ले रहा हूँ, तो हम बोलते हैं ना, ये बच्चों को एड़ा बनाने का काम है, सिंपल है. उसका बेनिफिट वही है, सिलेबस भी वही है, पढ़ाना भी वही है, टीचर भी वही होगा, लेकिन उसको एक इंटरेस्ट की भाई ये भी एग्जाम दे रहा हूँ. जी हाँ.
थोड़ा सा अलग से उसको कुछ अलग चीजें मिल जाती है और टीचर्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. थैंक यू सर. Thank you. Yeah, thank you, sir. Snehalata Hava, हाँ. and then there's Monica also who's raised hand. Then Yeah, I'll- yes. Monica. Snehalata. हाँ She will be asking about Homi Bhabha. हाँ सर. सृजिल सर को पहला थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और उसके साथ मेरा छोटा जो है कि साई विनेश हवा, तो उसका कहना है कि जो भी केवीपीवाई का जो है वो कितने दिन तक वैलिड है, ऐसा पूछ रहे हैं. आई कार्ड कितने दिन तक वैलिड है? उसमें मैं बताता हूँ कैसे होता है. वंस यू आर अ स्कॉलर, यू आर अ स्कॉलर. स्टाइपेंड मिलता है ना आपको, स्टाइपेंड. उसमें क्या होता है, देयर इज अ कट ऑफ परसेंटेज, जैसे 70% का है. फॉर एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड में आपको बना दिया गया 5 साल के लिए होता है वैलिड. 5 साल. अच्छा, ओके. साल आपको केवीपीवाई स्कॉलर बन गए. नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा, जैसे मान लो 12th का है या एफवाई का, उसमें अगर आपको 70% से कम आता है तो आपको उस साल का जो पैसा गवर्नमेंट देना वो नहीं देगी गवर्नमेंट. ओके. उसका नेक्स्ट ईयर लेकिन 70% क्रॉस हो जाता है तो वापस पैसा देगी गवर्नमेंट. अच्छा सर, वो तो अभी 7th क्लास में है, तो 9th का होमी बाबा का उसको देना चाहता है, वो तो अभी से स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों ने स्टडी. बिल्कुल. अभी अगर आप नहीं स्टार्ट कर दो कवर नहीं कर पाता मैम. आप अभी एडमिशन ले लो फॉरेन, और फॉरेन स्टार्ट कर लो, उसको पढ़ाएंगे हम लोग. हाँ सर, वो तो केंद्रीय विद्यालय से है, तो स्कूल तो छोड़ना नहीं चाहता है. नहीं, स्कूल नहीं छोड़ा. हमारे यहाँ देखो मैम, आप समझो, हमारे यहाँ आपको अभी ऑफलाइन तो क्लास है नहीं. केंद्रीय विद्यालय का जो स्कूल का ऑनलाइन लेक्चर होता है, उसको 1-2 घंटा ही देना है. उसको सुबह से 6 से लेकर रात के 10 बजे तक वो हमारे पास जो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए उनके लिए है. जो बच्चा 10th के बाद हमारे पास, हमारा कॉलेज के साथ टाई अप है, तो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते कॉलेज में. अभी एक बच्चा केरला में बैठा है, वो बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ता है. लॉकडाउन में उसने एडमिशन ले लिया हमारा 11th में, तो 11th के एडमिशन स्टार्ट हो गए. वो अभी 10th के बाद हमारे पास रहेगा तो 19 साल तक रहेगा. 11th भी हमारे पास करेगा, 12th भी हमारे पास करेगा, एनडीए भी हमारे पास पढ़ेगा, IISER का एग्जाम भी देगा, केवीपीवाई का एग्जाम देगा, IMU-CET का भी एग्जाम देगा, SSR का भी एग्जाम देगा, एयरमैन XY का भी एग्जाम देगा. ये सब मैं नाम गिनवा रहा हूँ आपको. ऐसे 14 एग्जाम होते हैं. ओके. तो ये सारे एग्जाम, और उसके बाद और कोई एग्जाम गवर्नमेंट बोलेगी या हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम आपको देना है. ये सारे एग्जाम का हमारे पास एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है. उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग 3 साल के लिए ले लेते हैं. ओके. तो वो है, आपका बच्चा पढ़ेगा 1-2 घंटा ही पढ़ाना उसको ऑनलाइन. तो जो भी आप, हमारे टीचर संगीता मैम भी ऑनलाइन है, उनसे आप बात कर लेना और उनको बात करके एडमिशन ले लेना. ठीक है. ओके, कोई बात नहीं. ओके. मोनिका मैम. Monica, I'm unmuting Monica. Monica, please accept. Yes, sir. Hello, everyone. Sir, सबसे पहले I would like to say thanks to Sharjeel sir, क्योंकि ये जो लेक्चर था ये इंफॉर्मेटिव तो था ही, बट एडिशनली ये शॉर्ट एंड स्वीट था, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे लेक्चर के बारे में. सेकेंड थिंग, मैं अरविंद सर से कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी बातें की, तो उससे ये सिर्फ इनकरेजिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, तो ये टीचर्स के लिए भी था. तो मुझे मतलब सच में आज मैं इतना ज्यादा इनकरेज हुई हूँ, और बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग भी कर सकते हैं. और मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर टीचर्स के लिए भी ऐसी कुछ चीजें हैं आउट ऑफ कंट्री, तो मुझे अच्छा लगेगा करने के लिए. और थर्ड वन है, मैं अनित सर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ये सारा सेशन करने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिली, हम लोग इनकरेज हुए. सर, मुझे और एक बात बोलनी थी, मैं अनाउंस कर सकती हूँ क्या? मतलब सीईटी की जो एग्जाम है, तो जो स्टूडेंट्स ने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो उन्होंने फिर से जो उनकी जो ऑफिशियल साइट है वहां पर लिंक को रीओपन कर दिया है उन्होंने. तो जिनका फॉर्म हाफ रह गया था, या फिर पेमेंट बाकी था, या फिर किसी में रजिस्ट्रेशन, 31 मई तक. तो 31 मई से पहले तेरा एक लेक्चर सीईटी पे होना चाहिए. ओके, फाइन सर, मुझे चलेगा. और उस पे क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चन है. नवनीत के गाइड में भी है कि जो क्वेश्चन सीटी में भी आए, जेडब्ल्यू में भी और एनडीए में भी आए. अमर, अकबर, एंथनी ऑन सीटी, जेडब्ल्यू एंड एनडीए, ये टॉपिक है तेरा. मोनिका, अमर, अकबर, एंथनी ऑन सीटी, जेडब्ल्यू एंड एनडीए, सुना ना? यस. हाँ. अरविंद, ये मोनिका मैम है, MSc बीएड किया है, फैंटास्टिक टीचर, और बहुत सारा चीज, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा सकती है. उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जैसे मैथ्स भी पढ़ाती है, फिजिक्स भी पढ़ाती है. तो मैं जितना होता है मेरे टीचर्स को मैं नॉलेज देता हूँ, और वो ऑप्शंस देख रही है बाहर पढ़ाने का. तो इफ एनीथिंग इज देयर, लेट हर नो. हां, श्योर, आई कैन कनेक्ट हर विद यू इफ यू डोंट माइंड. प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, नो प्रॉब्लम. सी, वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर, अरिस्टस का मोटो है. तो कोई बाहर जाएगा, आगे रिसर्च करेगा, तो मेरा ही नाम होगा. तो फैंटास्टिक.
कोई प्रॉब्लम नहीं है. Anybody else, Sharjeel? Srivardhan has again raised his hand. I'll Srivardhan. Who's this? Where? Yeah. unmuting him. Hello, sir. Srivardhan. Hello, sir. Srivardhan, can you speak a bit louder? Yes, sir. हाँ बोलो. Hello, sir. Sir, अभी KVPY का जो फॉर्म रिलीज हुआ है, तो फिर उसका आखिरी डेट क्या है फिल करने का? बेटा चालू भी नहीं हुआ अभी, तो जुलाई में स्टार्ट होगा. ओके सर. और सर आई हैव पास 10th ना, मतलब अभी 10th का एग्जाम हो गया, तो हाँ. अभी तो फिर अभी मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ क्या? 10th के बाद ना अभी मतलब 11th में सी इस साल ना बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, राइट. सो वंस जुलाई का सेकेंड वीक आता है ना, सेकेंड संडे यूजुअली, तो द फॉर्म्स का वेबसाइट गेट्स ओपन KVPY का. आई विल highly recommend you to visit that because of this ambiguity they will let us know. See, I'll tell you, IISER का जो होता है ना 12th के मार्क्स आने के बाद होता है फॉर्म्स का, बट इस साल इन लोगों ने क्या किया, दे आर नॉट वेटिंग फॉर 12th का मार्क्स, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि स्टार्ट फिलिंग फॉर्म इवन दो मार्क्स नहीं आए, वो बाद में देखेंगे. तो आई एम नॉट श्योर इसका KVPY का भी ऐसा शायद होगा, बट आई विल हाईली recommend that in the second week of July, on the second Sunday of July, in fact, please visit the KVPY का website. Okay, sir. Thank you, sir. Somebody is also asking, is there any exam to join ISRO? Urtik Nigam, we will be speaking on ISRO, BARC and TIFR and TIS later on. So we'll reply to it later on. Let us stick to this topic today, okay? ये चार चीज पे हम लोग बात करेंगे आपको, ISRO, BARC, TIFR और TIS के बारे में. और भी एक इंस्टीट्यूट है IISc. हमारा ये रोज का लेक्चर है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हम इसको जानबूझ के लेंथी नहीं बनाते हैं. मेरा 3 मोटो है. वैसे वापिस अमर अकबर आंतरी बोल रहा हूं मैं. पहला मोटो है कि मेरे बच्चों को अवेयर करें कि ये क्लासेस मेरे बच्चों के लिए 11th 12th और जो मेरे पास पढ़ते हैं ना एनडीए के लिए, कि उनको ये पता चले कि क्या क्या ऑप्शन है और कैसे पढ़ना चाहिए. दूसरा मोटो है मेरा कि हमारे टीचर्स और हमारे टेलीकॉलर्स जो है उनको पता चले कि वो क्या पिच करे, पेरेंट्स को क्या बात करे. पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि फॉर्म भर रहे हैं. मेरे पता ना, एक जॉर्ज नाम का बंदा मेरे से बात किया, उसने मेरे को लीड जनरेशन का टीम है उसका, उसने मेरे को पहला क्वेश्चन ये पूछा, भाई सर आप जिनसे बात कर रहे हैं आपके ऑडियंस में, क्या उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है? आपको पता है, ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, 44% इंडिया में अभी तक लोगों के पास इंटरनेट नहीं है. ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं मैं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है. 44% इंडिया में अभी तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. सेकेंड, हमारा क्लास 7 लॉ चौक में नहीं है, हमारा क्लास विश्रांतवाड़ी में है और हमारा कोई ब्रांचेस नहीं है. हमारा एक ही ब्रांच है विश्रांतवाड़ी में. वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांचेस. The other thing is we are trying to give franchisee. That is a different story. Second thing is आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है कि आप अपने बच्चों को इंटरनेट देना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटरनेट नहीं देना चाह रहे. उनके पास क्या आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्सेलेंट क्वालिटी का है? ये 3 क्वेश्चन है. डिवाइस आपके पास अच्छा है क्या? क्योंकि 1.5 GB जियो देता तो मम्मी को सास बहू का सीरियल देखने का, पप्पा को गाना सुनने का है, और पप्पा खेती में गए तो बच्चा कहां से पढ़ाई करेगा? तो बहुत सारे हमने सैटरडे संडे छुट्टी दिया और 4 बजे क्लास वगैरह, तो आधा टाइम तो उनका इंटरनेट ही खत्म हो जाता है. इनका क्या है, हमारे टीचर को शाम को इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता. अफरोज सर शाम को इसलिए नहीं पढ़ते कि वो इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, इच्छल करंजी के गाँव में रहते हो लॉकडाउन के बाद. तो ये पहला ये इश्यूज है. ये तो बहुत बात की इश्यूज है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. समझ में आया ऑल ऑफ यू? सर नेक्स्ट और क्या सर? वो सोनाली मैम इज ऑन द लाइन. आई वांट हर टू स्पीक. वेयर इज सोनाली? I'll just check. एक second. Yeah, I saw her. Sonali, unmuting you now. Please accept. सोनाली मैम, अरविंद ये मैम है काउंसलिंग के लिए, जो सारे जो तूने जैसे बता ना फिल्टर करना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो डेट्स है एग्जाम में, हम 3 बार उनको नोटिफिकेशन मेरे स्टेटस पे डालता हूँ, बोलता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ. टेलीकॉलर का यूनिट बैठा के रखा है. 12 टेलीकॉलर अनीस क्लास में. अनीस क्लासेस अरविंद वन मैन शो था पहला, अभी 12 टेलीकॉलर है अनीस क्लास में, जो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. कोशिश कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. यस सोनाली मैम. यस सर, गुड इवनिंग सर. आपको ये तीनों टॉपिक पे बात करना है, KVPY, IISER और होमी बाबा. बोलिए क्या नया सीखने को मिला शर्जील सर से आपको? सर एक्चुअली काफी डिटेल में पता चला. मैंने रीड किया हुआ था काफी कुछ, बट आज काफी सारे और भी कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए.
सिलेक्शन प्रोसेस, परसेंटेज जो होता है वो सब, ये तीनों एग्जाम्स मेरे को इंडिविजुअली पता थी कि कौन सा स्टैंडर्ड में होता है, कैसे होता है, राइट। बट किस तरीके से एक दूसरे को लिंक्ड है ये कॉन्सेप्ट आज काफी क्लियर हुआ मेरा। रिसर्च बेस्ड है बेसिकली तीनों चीज जो है। एंड हम लोग जो स्टूडेंट्स को काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि बेसिक्स क्लियर करो, अपने जो बेसिक्स है वो क्लियर करो, एंड लाइक रट्टा मत मारो, किसी भी चीज को मगअप मत करो, रट्टा मत मारो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों एग्जाम्स में। वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड फ्यूचर में जो है ये सब चीज की ही बहुत वैल्यू रहेगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ही करियर वाइज इफ यू सी यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। बट अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये आज ये सेशन से क्लियर हुआ। थैंक यू मैम। लास्ट हमारी साइकोलॉजिस्ट है जिमी मैम, आई वांट यू टू स्पीक। I'll unmute her right now, Jimmy. Hello, good evening, everyone. Good evening, Jimmy. Good evening, sir. Hello. Yes, yes, we are able to hear you. Yes, Jimmy. Whatever I have learned or whatever I have experienced was completely new for me. So one thing what astonished me or amazed me was when I don't remember the sir's name, but someone telling maths, a mathematician can teach physics, but not a physics can teach maths. Like, this is something very new to me, and it's so enlightened I have a friend from maths, so at that same point I texted her, is that true? And she said yes, it is true. So now when we I have come across talking about research, when you were talking about different types of exam based or exam oriented topics. So these are something new, and especially science. I have never have been I'm an art student, humanities student. So science, knowing certain exam oriented different types of tests and exams, entrance exams. So these things are very new to me, and I'm looking forward to know more about it, so that as a psychologist I can give a holistic development to this particular area. Thank you, sir. Thank you so much, Jimmy. That's what we are looking for. Anis? Nothing else. Arvind, I think I'll be taking a feedback from my children. If you can, if you want to, you can go, Arvind. No problem. Huh? Arvind, are you online? I can wait. I'll just check. Yeah, he's mute. I'm unmuting him. Wait. Yeah, Hello, Arvind. Yes भैया. Thanks for being on the line. अभी हम लोग हमारा एक जनरल डिस्कशन करेंगे. If you want to be there, you can be. If you want to go, no problem for us. And I'm very happy that you spent almost an hour with us. Thank you for your time. Because I always tell my Alexa, Shahrukh sir, कि पैसे कोई भी दे देगा, टाइम आजकल कोई नहीं देगा. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है. Exactly. तो अगर किसी ने टाइम दिया ना तो बहुत वैल्यूबल है. So thank you for your time that you have spent with my staff and students. Just last thing, once as we were speaking about this, Mr. So what was the name of the psychologist once again? Jimmy ma'am, yeah. Jimmy ma'am, yes. So there was also one question on YouTube saying that people are suppressed with knowledge. They have feel anxiety, some kind of complexion. So now that you already have a psychologist on your board, why not you also have some kind of mind exercises for the children, before the start of the classes or at the end of the classes. I mean, this really helps because I'm trying it right now. हमारे time पे हम नहीं करते थे, but when I do it on the professional level, it really helps to get rid of this anxiety, especially and the fear. Mind exercises. देखो बोलो कि अरविंद मैं ऑलरेडी मेरे क्लास में माइंडफुलनेस और हार्टफुलनेस के नाम से मेडिटेशन वर्कशॉप होता है. Okay, that's very good. ऑलरेडी हम लोग करते हैं, बच्चों को मेडिटेट कराते हैं, हार्टफुलनेस कराते हैं, माइंडफुलनेस कराते हैं. अभी वेरी गुड कि ये बच्चों को घर पे करना पड़ेगा पेरेंट्स को. ये तीन चीजें, माइंडफुलनेस है, हार्टफुलनेस है और मेडिटेशन वर्कशॉप है. बच्चों को योगा कराओ, तो मेंटली दे विल बी मोर. माइंड एक्सरसाइज कराना चाहिए. हमारे जब ऑफलाइन क्लास होते थे ना, हमारे क्लास में होता है वेरी नाइस. बंद करके क्लास में बच्चों को बिठा के लोग सो जाते हैं 15 मिनट के लिए, मेडिटेट करते हैं. हाँ, थैंक यू फॉर सजेशन. लेकिन बट आई वांट टू टेल द पेरेंट्स दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, एंड नाउ व्हाट अरविंद सेड, यू हैव टू डू माइंड एक्सरसाइज एट होम आल्सो. Thank you, Arvind, for your precious time.
and I will ask all your batchmates to spare 1 hour for me, and every day we have a lecture session for this week. So let them come and speak. To Yeah, tell that would anybody. that could be a very good opportunity actually. Yeah. You know, different from different fields coming on, speaking their experiences. सच में मतलब exposure भी मिलेगा बच्चों को, different aspects of career भी पता चलेगी उनको, and this will broaden their knowledge. So I think I will try my best to spread this word to all of our batchmates are also. Thank you for being here, and stay careful and be blessed. Huh? Now you're not alone. Your wife is also there, so don't roam here and there. I see on the Facebook that you have adventurous trips, but be careful and be safe. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Yeah. Anybody else? Thank you so much. We gave Asif. Asif is there. Asif sir. No one. Where is Asif sir? कहाँ है आसिफ सर? आसिफ सर को देखो कहाँ. मोहम्मद फैजान को अनम्यूट करो. मोहम्मद फैजान को आसिफ सर को बुलाओ. कहाँ है? देखो बुलाओ ना मोहम्मद फैजान. आसिफ सर दिल्ली. हाँ. I'm unmuting him. या है क्या लेक्चर में? फैजान सर. I'm trying to unmute. हाँ. Please accept the unmute. नहीं सर, फैजान सर को फोन लगाओ. लगा के बैठ गए. फैजान सर को फोन लगाओ. पकड़े के बोला. अदनान को बोलो बात करें. अदनान नहीं है ना सर? अदनान है. उसका नाम है मोहम्मद शाहीन उस्मानी के नाम से. देखो गाड़ी के सामने खड़ा है फोटो. शाहीन उस्मानी. अच्छा हाँ. अनम्यूट. पेरेंट्स को जाना चाहते हो, पेरेंट्स जा सकते हैं. हमारा लेक्चर 1 घंटे के लिए होता है. 1 घंटा हमारा इंटरेक्टिव सेशन होता है और आधा घंटा हम लोग फीडबैक लेते हैं. ये लेक्चर 2.5 घंटे चलने वाला है. तो 1 घंटे में पेरेंट्स को, जिसको पेरेंट्स को जाना है वो लेफ्ट आउट कर देते हैं. जिनको सुन के जाना है, यहाँ कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है चाहते कि इंटरेक्टिव हो, कि हर बच्चों से हमको बात करना है. क्योंकि अभी ऑफिशियली और वर्चुअली बच्चों से हमको बात करने को टाइम नहीं मिलता. हमारे स्टाफ से बात करने को टाइम नहीं मिलता. हमारे टेलीकॉलर से हमको बात करने को नहीं मिलता. तो एक मौका होता है, हमारा एक मीटिंग भी होता है इंडायरेक्ट. अदनान उस्मानी बात करेगा. हाँ सर बोलिए. वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर. अदनान, कैसा लगा लेक्चर? सर फर्स्ट लेक्चर नहीं है. हाँ. थर्ड लेक्चर सर बहुत अच्छा लगा लेक्चर सुन के. हाँ सर, नए आइडियाज पता चले कि फॉरेन कंट्री में एजुकेशन कैसे होता है और किस तरह के प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और उन सब चीजों को टैकल कैसे कर सकते हैं. ये एक लाइव एक्सपीरियंस हमें देखने मिला है. बच्चे कितने होशियार है देखो ना. वो अब्दुल रहमान को मैंने चांस नहीं दिया, मतलब बाद में बात करेंगे, तो उसने डायरेक्टली अरविंद को कनेक्ट किया जूम से. तो बच्चे कितने टैलेंटेड रहते हैं, इमेजिन. और लेकिन हम लोग, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से लोग ग्रो नहीं होते. सरजील, आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, I'm understanding. अब्दुल रहमान इज फ्रॉम विजन एकेडमी. कुछ एजुकेशन नहीं है उधर, लेकिन उसको जब मालूम पड़ा कि बंदा आया भाई स्विट्जरलैंड से, उसने जूम को, यहाँ से उसको चांस नहीं मिला तो जूम से उसको कनेक्ट किया. Correct. तो हमको लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम 2.5 घंटा बात करते हैं. 1 घंटा हमारा सेशन होगा, 1 घंटा किसी से डिस्कशन होगा क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और आधा घंटा हम फीडबैक लेंगे. ये हमारे लिए, हम लोग कर रहे हैं, हमारा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है. Absolutely. तो तेरे को बोल रहा हूँ मैं अदनान, KVPY के IISER के, और कौन सा तेरा होमी बाबा के क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन से निकालेंगे सब. हाँ. और होमी बाबा का और KVPY के जो क्वेश्चन है ना, उसी को ND और कैट के पेपर में डालना है. ठीक है सर. समझ में आ रहा है मेरी बात को? हाँ सर. हाँ, तो बच्चों को पता लगने जाना, बच्चों लोग फिर पढ़ेंगे उसमें से. हाँ. KVPY का, IISER का और होमी बाबा के जितने भी साइट से जितने भी कंटेंट है, उसको निकाल के क्वेश्चन निकाल के देख, और उसमें क्या क्या आता है उसको उल्टा के ND के और SPA के पेपर में डालना है. पेरेंट्स को पता होना चाहिए मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ पेपर होता है रोज. तो उसके लिए क्वेश्चन मिलते नहीं, तो हम लोग यहाँ वहां से ढूंढना पड़ता है हमको नए क्वेश्चन. इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है. हाँ फैजान सर बोलिए. कहाँ है फैजान सर? हो गए सर. मोहम्मद फैजान लिखा है सर, MOHD. अनम्यूट है, सब अनम्यूट है. हाँ मोहम्मद फैजान बात कर सकते हैं आप? हाँ सर. हाँ, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन. एक सेकंड. हाँ सर सबको म्यूट करो, तो आवाज ही नहीं आएगा. तो 1 सेकंड. हाँ. और जिसको बात करना है वो खुद से अनम्यूट कर सकता है, ऑप्शन है. अनीश, यू कुड अनम्यूट. फैजान, यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. कहाँ है फैजान सर?
फैजान सर खुद को अनम्यूट करो आप। बोलिए। आवाज नहीं आ रहा आपका, आसिफ जल्दी को बोलो। जी सर। हाँ फैजान सर ने बोला, आप बोलो आसिफ सर क्या समझ में आया आज शर्जील सर के लेक्चर में? मैं शुरू में था लेक्चर में, फिर मैं बीच में चला गया। कोई बात नहीं सर। होमी बाबा का पता लगा पहली बार सर, होमी बाबा का पहली बार पता लगा मुझको। अच्छा होमी बाबा का पता नहीं था। और सर आपके दिल्ली स्कूल में होमी बाबा के लिए बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते क्या? नहीं सर, अभी बहुत कम लोगों को ये पता है, अवेयरनेस आप दे रहे हो, बहुत कम लोग। तो आप उनको बोलो अनीस क्लासेस पढ़ाएंगे होमी बाबा के लिए, मार्केटिंग करो सर। बिल्कुल सर। दिल्ली बड़ा ये है, मार्केट है। हाँ तो अभी बच्चों में और कौन है अपने स्टाफ में, कोई रहेगा क्या? और मैं चौधरी सर। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर क्या हाल है? हाँ, आज का ये जो लेक्चर जो है अपना, जो KVPY और अपना होमी भाभा और IISER का, ये लेक्चर बहुत अच्छा रहा सर। इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और हमें जो पेरेंट्स जो हैं प्लस स्टूडेंट्स भी हैं, वो सभी को इससे बहुत फायदा होगा सर। हाँ जरा बच्चों को भी बोलना सर, ये सब एग्जाम की हम तैयारी करते से बोलना है उनको। राइट सर। आशा मैम, आशा जैन मैम को अनम्यूट करो मैम। नहीं रहने दो, खुद से अनम्यूट कर सकती है। अच्छा मैम। हाँ बोलिए मैम। हाँ कुछ सर अच्छा था लेक्चर, बहुत और काफी सीखने मिला सर, काफी नॉलेज मिला सर, जो एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। हाँ तो आप अभी बच्चों को जब आप बात करेंगे पेरेंट्स से, तो आपको सोनाली मैम से सीखना है कि कौन सा फॉर्म कब निकलता है, और ये बोलना है कि हम ये एग्जाम्स की भी बच्चों को तैयारी कराते हैं। जी सर। हाँ तो ये क्योंकि पेरेंट्स से एक ही चीज नहीं बात करना है, पेरेंट्स से अलग अलग बात करने के लिए आना चाहिए आपको सर, इसीलिए एक्चुअली लेक्चर मैं भी अटेंड कर रही हूँ ताकि सारे लेक्चर आपको अटेंड कर रहे हैं। जी सर। हाँ जी। ये परवेज बागवान साहब कौन है जो कुछ बात करना चाहेंगे? परवेज बागवान साहब। हाँ शाहरुख सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शाहरुख, आवाज कम है सर। अभी आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? एकदम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। सर यहाँ पे सीखने के लिए तो बहुत कुछ था, जितने भी एग्जाम्स के बारे में आपने डिटेल्स दी माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया, और बहुत सारी चीजें बहुत लोगों के लिए नई भी थी, और उसमें भी सबसे ज्यादा आपकी मेहनत मुझे PPT में दिख रही थी सर। जिस तरह से आपने उसको डिजाइन किया है ना, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत मेहनत किया सर आपने उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच शाहरुख, थैंक यू। ये कौन है? स्वाति मैम। हाँ यस भैया। हाँ बोलो, क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, और मैंने देखा भी है वहाँ पर कि आप शाहरुख सर वगैरह सारे बच्चों से कैसे करवा के लेते